मारूफ तो मेरे साथ, हमें लाल आप ले लीजिए मारूफ का केस। ठीक है, ठीक है। ठीक है सर, तो फिर मैं स्टार्ट करते हैं फर्स्ट केस से। डॉक्टर डॉक्टर साहब जैसे डिसाइडेड था फिर वैसे ही फर्स्ट केस ले रहा हूँ मैं। ओके। सर बस 1 मिनट दीजिएगा मुझे। सो आई एम पुटिंग द टाइमर ऑन फॉर 25 मिनट्स, जैसे पहले हम कर रहे थे। तो ये 24 मिनट्स। ओके सर, डॉक्टर लाल रहमान सर, अच्छा, ओवर मैं टू इसको यू। एक दो बातें इनसे करता हूँ। अच्छा, यानी जब एग्जाम में आप जाते हैं तो वन शुड बी फ्रेश, और बिल्कुल आप इसको एक ऑनर ले लें कि भाई आपका पार्ट 2 का एग्जाम हो रहा है। और ये जो लॉन्ग केस की बात करें, सर कल भी मैंने बताया था कि वी एग्जाम में क्या होता है कि वी गो टू सेलेक्ट लॉन्ग केसेस, और वही पेशेंट सेलेक्ट होता है जो जिसमें फाइंडिंग्स हो, देयर इज नो कंफ्यूजन। ये लॉन्ग केस जब हमारे हर एक स्टेशन पे अलग अलग लॉन्ग केस डाले जाते हैं, तो उसको 2 एग्जामिनर होते हैं, हम उसको एग्जामिन करते हैं, उसकी हिस्ट्री लेते हैं, सारी फाइंडिंग लिखते हैं। तो ये आप लोगों के जहन में होना चाहिए कि ये इस पेशेंट के बारे में वी नो अबाउट द पेशेंट, उसकी फाइंडिंग्स भी हमें पता होती हैं, उसकी हिस्ट्री का भी हमें पता होता है, उसकी जो इन्वेस्टिगेशन है उसका भी पता होता है। तो यू शुड बी ऑनेस्ट, और आपने वहां पे अपनी तरफ से फाइंडिंग नहीं बतानी। अगर आपको जो चीज नजर आती है अपने वही, क्योंकि हमें पता होता है इस मरीज के बारे में, तो इस चीज को जरा ख्याल रखें। और वहां पे चूंकि 1 घंटे का टाइम यहाँ पे जैसा फारूक ने बताया, तो हम उसको उसके मुताबिक करते रहेंगे, लेकिन आपने बिल्कुल सही हिस्ट्री लेनी है और सही एग्जामिनेशन करनी है, और जो भी क्वेश्चन हो उसके मुताबिक जवाब देना होगा। सो बी रिलैक्स, और बिल्कुल इसको एक कानून ले ले, ठीक है जी ओके फारूक। डॉक्टर मारूफ, एंड आई एम स्टार्टिंग द टाइमर एंड सर दिस इज द केस। ओके, यानी इसमें ऐसा होगा कि ये आपको एक ब्रीफ से इंफॉर्मेशन मिल रही है कि 30 years old मेल पेशेंट प्रेजेंटेड विद हिस्ट्री ऑफ सीजर्स फॉर 2 years। आपने अभी हिस्ट्री लेनी है, फर्दर हिस्ट्री, और उसकी बेस पे पर हमारी डिस्कशन होगी, उसके बाद फिर एग्जामिनेशन की तरफ हम जाएंगे। तो हाउ विल प्रोसीड? बस बहुत फोकस से आपने हिस्ट्री बतानी है, हाँ, ठीक है। बिल्कुल, यानी बिल्कुल टू द पॉइंट आपने चीजें करनी है। अच्छा, आपकी जो है कैंडिडेट्स कौन से, राइट या लेफ्ट? सर आपसे पूछनी है या फिर मैं आस्क करते जाऊँ, इस तरह बताते जाऊँ? आप पूछिए और फारूक बता देगा। इस हिसाब से ओके काम सर, कर। एक मिनट में जरा इसको देखता हूँ दूसरे यस लैपटॉप में। सर। अगर अगर आप खुद मैं बता देखता देंगे हूँ तो मैं। सर वो यस जल्दी जाए। यस यस, ठीक है, आप पूछिए एंड आई विल टेल यू। किस हिसाब से काम जी, कर? ये राइट हैंडेड है। और सर ऑक्यूपेशन कोई काम का? ही द पेशेंट इज शॉपकीपर है वो। अब फोकस अभी कहा ना, फोकस इसमें लेनी है आप आपने जो ना हिस्ट्री। ये इररिलेवेंट चीजें नहीं पूछिए, आप सिर्फ टू द पॉइंट जाए। अच्छा, कुछ सवाल पूछूंगा, उसका हाँ या ना में जवाब देगा। आपको सर में दर्द तो नहीं है? नो, देयर इज नो हेडेक। देखने में कोई मसला? नो, सुनने माय में कोई विजन इज इंटैक्ट। सुनने में कोई मसला? नो जी, बिल्कुल दैट इज ओके। चेहरे पे सुनपन या कोई कमजोरी? नो, देयर इज नो वीकनेस। निगलने में कोई मसला? चलने दैट में इज कोई ऑल मसला? राइट। नो, नो प्रॉब्लम इन वॉकिंग। पेशाब के कंट्रोल में कोई मसला? दैट इज फाइन। ठीक है। मुझे इसका अपने जो है झटकों के बारे में बताएं। सबसे पहला झटका आपको 2 साल पहले आया था, उस वक्त आप क्या कर रहे थे? तो जो ना मरीज काम कर रहा था, सपोज आई एम रिलेटिव ऑफ द पेशेंट, वो काम कर रहा था और उसको उसको झटके पड़ना शुरू हो गए, बेहोश गिर गए और बेहोश हो गया था। सही। तो आपने देखा पेशेंट जो झटके आ रहे थे, तो उसमें कोई उनको मुंह में झाग आया या आंख के ऊपर चढ़ गई, उस तरह कुछ हुआ था? बिल्कुल, उसका उसका सारा जिस्म हिल रहा था। ठीक है। जबान कटी थी उसके बाद, झटके के बाद ऐसा कुछ हुआ था? पेशाब? जबान थोड़ी सी कटी थी और पेशाब उसका नहीं निकला था। ठीक है। और ये जब झटका आने लगा था, उससे पहले कुछ बता रहा था मरीज का, मुझे कुछ अजीब सा लग रहा है या कुछ फील हो रहा है? वो बता रहा था कि उसको कोई जो है ना आंखों के सामने कोई चीजें नजर आ रही है, उसको जरा प्रॉब्लम हो रहा था उसको, यानी उसका मूड ठीक नहीं था उस वक्त। ठीक है। और जी, उसके झटके के बाद उसको कितनी देर बाद होश आया था? तो वो बस ठीक था, इन होश में था, थोड़ा सा होता, लेकिन ही वॉज फाइन। और उसके झटके के बाद कोई कमजोरी या नहीं, देयर वाज नो 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 डेफिसिट। उसके बाद कोई झटका आया था पहले झटके के बाद? जी जी।
पहले झटके के बाद दूसरा झटका कब आया था, इसके बाद कोई और झटका? दूसरा झटका भी रिसेंटली एक 2 हफ्ते पहले आया। उसके बीच 2 साल से लेकर अब तक इसके बीच में कोई झटका नहीं बीच आया? में कभी कभार झटके होते थे, इसलिए इस तरह कोई 5-6 महीने के बाद सर 1-2 हो गए इसको। और झटकों के लिए कोई दवाई लेते थे? और यस, डॉक्टर ने दवाई उसको एडवाइस की थी। और दवाई का नाम याद है, कोई पावर उसकी, और कितने टाइम लेते थे? वो उसका नाम एपिवाल है और 2 टाइम लेता था। पावर याद है, 250 या 500 mg? और जी जी, कोई पावर उसकी 250 या 500? 500 मिलीग्राम। अच्छा, जब दूसरा झटका आया था तब दवाई ले रहे थे या दवाई छोड़ दी थी? दवाई उसने वो ले रहा था, लेकिन फिर भी आ रहा था? वो, जी जी। अच्छा, ठीक है। और जो सर का दर्द है वो कब से शुरू हुआ है? सर का दर्द नहीं है। नहीं है? नहीं है। इसके अलावा इसको कोई गुस्सा आता हो, याददाश्त में कोई मसला? नहीं नहीं, कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। और जो झटके से पहले इसको जो नजर आता है वो वैसे ही इसको नजर आता है या सिर्फ झटके में ये नजर आता है, झटके आने से पहले? नहीं, बस कोई सारा मसला नहीं होता। इसके बाद अलावा में झटकों के बाद कभी कभार याददाश्त का मसला शुरू हो जाता है इसको, थोड़ी देर के लिए, फिर ठीक हो जाता है। कभी चलते चलते गिर जाता हो या ऊपर देखने में मसला होता हो? नहीं नहीं और सर, कोई प्रॉब्लम नहीं। हाथ हाथ पैर के साइज में चेंज होना, आवाज का भारीपन होना, पेशाब ज्यादा आना, भूख ज्यादा लगना, ऐसा कुछ? नहीं सर, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। तो फॉर टाइम कितना हो गया है, जरा हमें बताया करें, हमें रोक लिया बीच में। जी, ओके। सर 4 मिनट्स हो तो गए। हाँ, ठीक है। तो 5 मिनट्स में हमने पूछने भी साथ साथ ना। ओके डॉक्टर साहब, तो आपको क्या इन्फॉर्मेशन मिली? सर, ऑन द बेसिस ऑफ माय हिस्ट्री आई थिंक माय लीजन इज इन द सुपरटेंटिव। आपकी आवाज सही नहीं आ रही जरा। सर, ऑन द बेसिस ऑफ माय हिस्ट्री आई थिंक माय लीजन इज इन द सुपरटेंटिव कंपार्टमेंट। नहीं, आपको क्या इन्फॉर्मेशन मिली? फर्स्ट टेल मी अबाउट द हिस्ट्री। History of there are the patient presented with the history of seizures that are generalized tonic-clonic type with loss of consciousness as well, and there's a history of aura with the seizures as well. Okay, so what do you think, where is the lesion? I think the lesion is in the supratentorial region. Why you say supratentorial? Because the origination of seizures will occur at that region. So where do you localize in the supratentorial region? In the supratentorial region, I looked at in the there was no lateralizing sign, but there was the presence of aura. So in the temporal region. Temporal, और कोई और lateralizing sign नहीं है इसमें? ये टेम्पोरल राइट पे कि लेफ्ट पे? Could be on the left side. How you say this? Because the patient is right-handed and left side are more common than I think it's because of that. Because dominance of the patient, and there were no other symptoms that localized my patient because. आपकी आवाज जो है ये माइक, आप उससे करीब हो जाए बिल्कुल, जो असल बात होती है वो आप हमें सुनाई नहीं देती आपकी जी। Sir, there were no lateralizing sign in the history, so on that basis I cannot say that it's in the right or the left side. तो आप कैसे पूछेंगे, आप कैसे मालूम करेंगे? हिस्ट्री में कुछ चीजें आपने पूछनी है ना जो आपने नहीं पूछी। ओके, नाउ वी आर गोइंग टुवर्ड द एग्जामिनेशन। तो क्या एग्जामिनेशन शुरू कर ले? So क्या क्या देखेंगे आप? on the examination, just the focus examination. I will first start with I will first check for his orientation, then orientation and his memory, as well as check for his primitive reflexes if they are absent or not, and check for the frontal drift as well. नहीं, आप मुझसे पूछिए, मैं बताऊं कि है कि नहीं ये चीजें। यू शुड जस्ट, आप जिस तरह आप हिस्ट्री में पूछ रहे थे, आप एग्जामिनेशन भी करें कि ये चीजें है कि नहीं है। अच्छा, आप ये बताएं अभी किस जगह पे हैं आप, और अभी क्या टाइम हो रहा होगा तकरीबन? आप patient is oriented in time and space. सही है। आपने नाश्ते में क्या किया था लास्ट, क्या याद है आपको कुछ, क्या आपने क्या याद आया था नाश्ते में? Yes, the patient knows about the breakfast. The primitive reflexes are or absent. जी जी, Primitive reflexes are absent. primitive reflexes are जी, It's a that is frontal normal. drifting. Calculations, finger agnosia and right disorientation.
No, these are normal. No such abnormality. No such findings are there. Then I will जी. do the cranial examination. I will first check the olfaction. Is olfaction intact in this patient? What? Olfaction. Olfaction. That is okay. That is fine. And the optic examination, visual acuity, visual field, papillary edema. Visual acuity and visual fields are normal. Papillary edema. Yes, there is papillary edema, mildly on the right side. And extra. No, papillary edema is on the left side. जी. And light and intact light reflex and extraocular movements. Those are normal. Facial examination, sensation, motor, as well as corneal reflex. They are in normal range. Jaw jerk and that is fine. Okay. And eye weakness, lower mouth weakness, nasolabial fold present or not on both sides. No, there are no such findings. Air examination, air conduction pattern, bone to constitution on both sides. That is fine. That is okay. And is there any lateralization from the hearing? Any what? Lateralization from the hearing in the other right Weber stats? No, both of them are normal. On a 9-10 clinical examination, any deviation from the uvula? No, those are also normal. There is no abnormal findings there. Gag reflex. That is fine. That is okay. Neck movement, shoulder movement. They are fine. Tongue protrusion as well as any deviation on the tongue. No, they are normal. And then upper limb, neck movement, any pain in the neck movement on sidewise or flexion extension. There are no such findings. In the upper limb examination, any scar deformity or wasting or fasciculation. So why you are asking for scar deformity in wasting? To check for any previous injury or any previous injury related to it, any history of fall. No such things. Power of the patient in biceps, triceps, wrist extension. Power is normal. Reflexes on the bicep, tricep, brachioradialis. Those are also normal. And Hoffman sign. That is fine. That is these are normal findings. Sensation and proprioception. Sensation are intact. Stygnosis, diaphysteria on both hands. So 10 minutes okay. We can give him the findings and we can move from there. Okay. ये इसकी फाइंडिंग्स है सामने जो नजर आ रही हैं जो सिर्फ पॉजिटिव फाइंडिंग है सर हमारे पास दो है लेफ्ट साइडेड पेपिलोरी में है और राइट प्लांटर अपगोइंग है जी बाकी सेंसेशन भी ठीक है ग्रासली न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन दैट इज अनरिमार्केबल सो आफ्टर टेकिंग हिस्ट्री एंड डूइंग दिस एग्जामिनेशन सो वेयर डू यू लोकलाइज द लीजन आपसे 2-3 क्वेश्चन पूछ जाते हैं वेयर इज द लीजन व्हाट इज द लीजन ये हिस्ट्री एग्जामिनेशन पे ये पूछे जाते हैं सो वेयर इज द लीजन The lesion is in the still in the supratemporal region and on the left side. Why you say it is on the left side? Because the left side papillary edema is positive and the right planters are absent. Okay. और क्या चीजें पूछनी चाहिए थी इस पेशेंट में जो कि आपने नहीं पूछी और नहीं देखी आपने? Sir, gate check करना था और What about the speech of this patient? Speech, yes. आपने नहीं पूछा ठीक है ओके चलो चीज बाद में हम डिस्कस करेंगे ओके सो what is your differential diagnosis? It could be a neoplastic lesion in this patient. Like? Could be a glioma or a meningioma. Or a meningioma. Meningioma. So why you say meningioma? Because there is a prolonged history of the 2 years, and it's there's not that much deficit in this patient. So benign type of meningioma. नहीं आपने एक हिस्ट्री की बात की दूसरा की ये आप माइक जरा करीब करिए आप जो असल बात होती है वो आपसे इधर उधर हो जाती है जी. Sir, could be a meningioma, could be a glioma in this patient. Why you say it might be meningioma? Because meningioma are slow growing lesions and they usually present with the long histories. The long history. ठीक है और कोई चीज? So I think in this patient this could be only these two things. Okay, so what are the things which are not in favor of meningioma in this patient? Sir, not in favor. Okay, आपने और क्या डिफरेंशियल बताया आपने?
So glioma differential, What do you mean by glioma? a low grade type of glioma, Low grade type of glioma. So why you say that? because of the presence of seizures in this patient and long history as well. Okay. और कोई चीज? Only these two. So what are the condition in which there is long history of fits, seizures? Could be glioma, could be meningioma, could be a hydrocephalus in this patient. Hydrocephalus. So how can you say hydrocephalus can have such long history of fits? Because ongoing hydrocephalus can cause this because of the continuous irritation of the nerves and as well as radical edema is present in this patient. नहीं, अगर हाइड्रोकेफेलस हैं तो क्या चीज इस पेशेंट में which are not favoring hydrocephalus? There's a vision abnormalities are not present in this patient, and gait abnormalities are also not present in this patient. Gait, vision, and memory as well. So then why you are including hydrocephalus? Because history, prolonged history can present with it. Okay, कोई और चीज? No, sir, not. In this in this history and examination, I can only think of these two things. Okay. So how will you proceed further? I would like to get an MRI plane with IV contrast for this patient. And so what do you want to see on MRI? I want to see what type of lesion weight is present and its involvement in the surrounding structures. Anything else? And I would have to check the mass effect as well as surrounding edema, as well as see if there's any hydrocephalus present or not. Okay. फरूख जरा MRI दिखाओ. Okay, this is MRI. ये बताइए इसको. How would you read this MRI? So this is an MRI of the brain axial view. MRI brain clear images of the axial view. I can appreciate an hyperintense region that is present in the insular region, also involving the temporal region as well on the left side. Why you say it is flare image? Because the gray matter is lighter than the white matter. कोई और finding इसमें? And the CSF is black. And there is a very okay. Very so what you will do further? I would like to get a contrast image to look for the. फरूख है जरा दिखाएं. जी, अभी रीड करें इसको. क्या है इसमें? This is the T1 post contrast images. I can appreciate an hyperintense region that is involving the left side from the. So what is your diagnosis now? This is a low-grade glioma. If I say it is not a glioma, it is infarction. I would like to see a DWI image for that. And so on this MRI, how can we differentiate? Generally, how can we differentiate between infarction and low-grade glioma? Infarction will usually have a territorial involvement, and it will have a surrounding edema as well. And on the basis of the history, it doesn't. If the history is present of the infarction, then it would be of a different intensity. Okay, so what you will do with this patient now? I will consult the patient regarding the. इसमें आप कोई और investigation करना चाहेंगे इस patient में? I can do the MRI spectroscopy to check whether it. What will you look for in MR spectroscopy? I will look for choline peak as well as NNA peak. Choline peak in? Decrease NNA peak and increase choline peaks. So how can that help you? It will differentiate. MR spectroscopy can differentiate from the high grade glioma to the low grade glioma. Or so why there is choline peak? Because of the increased cell turnover. तो उससे क्या होगा? If the cell turnover present, then it means that it is a high grade type of lesion. नहीं तो कोलिन कहाँ पे होता है? उसका सेल टर्नओवर से क्या ताल्लुक है? Okay, so what you will do with this patient?
I will consult the patient regarding the current disease process, as this is a low-grade type of glioma, and I will explain the patient the current disease process, and I will advise him to get surgery for this lesion. Okay, what are the treatment options in this patient? We can do a craniotomy and the excision of lesion. As well, we can observe the lesion, and we can do observation and surgical intervention in this lesion. These are the options. Okay, so observation में क्या बताएंगे आप मरीज को? Observation में I will explain that if there are if the frequency of seizures are increasing and it is being not controlled by medication, or if there what are the indication of surgery? If there is mass effect and surrounding there is a contrast uptake from the lesion, and the size of the lesion is increasing, so it will be the okay surgery. So if the patient is willing for surgery, so how you do, what you will do? I will admit the patient, optimize the patient, and take proper consent, and inform the OR. Achha, what you will tell in the consent? I will tell in the consent that we will do the maximum safe dissection of this lesion, and there will be a chance of deficit of this speech. That is, speech could be detected while doing the dissection. कोई और चीज speech के अलावा? There is also a chance for a weakness of as well, because why there might be weakness? Because if we go that if we go in to the deep of the lesion. Okay, so मरीज ने आपको इजाजत दे दी कि yes, you can go for my surgery. So what are the surgical options? In the surgical option is craniotomy plus excision of the tumor. So how can you do safe surgery in this patient? By doing the awake craniotomy. So how that is done? We first. What are the prerequisites for awake craniotomy? Lesion should be in the elephant area, and patient should be cooperative while doing this excision. यार ये माइक जरा करीब करो ना, बार-बार मैं आपसे कह रहा हूं ताकि आपके आवाज जी. Patient should be cooperative, and the lesion should be in the elephant area for the awake craniotomy. What do you mean by cooperative patient? A patient should be able to understand my command and able to respond when I'm asking him to do any command that is him during the operation. तो इसमें कौन से command important है इस patient में? While doing the surgery, I have to ask him to tell me his name, or to repeat some numbers, or to start counting like that. And if he is stuttering or is not able to follow the command, then I will stop my surgery in the region. So what are your concerns when we are going to operate on this patient while during awake craniotomy? I don't understand the question. Ji? Sir, I don't understand your question. So what are the important things for you? What are you observing while you are going for awake craniotomy? आपने इस पेशेंट में क्या बचाना है? During my awake craniotomy, I have to look for the surrounding vessels and to remove only the involved. Okay. So what are the complications of this surgery? In this surgery, we can because this is an eloquent cortex, and doing too much surgery can cause deficit in this patient. It can involve the judgment of this patient, memory of this patient, as well as can cause weakness in this patient if we do too much dissection in the deep side, and speech of this patient can be affected as well. इस पेशेंट में बाद में अपने ऑपरेट के बाद में बायोप्सी रिपोर्ट दैट टर्न्स आउट टू बी लो ग्रेड ग्लायोमा, सो क्या करेंगे आप पोस्ट ऑप? Post op, I will repeat the scan after 3 months and check if there is any residual left or not. And if the residual is there, so what you will do? If the residual is there, I will follow the patient with a repeated scan after 6 months. And if there is no increase size, then I will repeat the scan every year for the next year. And if there is any increase in size, then I will discuss with oncology for stereotactic surgery. वहाँ पे क्या डिस्कस करेंगे oncology से? What are in your mind?
क्या करेंगे? Because for radiation option in this patient, Which type of radiation? stereotactic radiosurgery. Stereotactic radiosurgery. What type of stereotactic radiosurgery do you know? Cyber knife and gamma knife. So what gamma knife is doing? Gamma knife, with the help of gamma knife, we can irradiate the area that is left or that is causing a recurrence, so that we don't need to do the further surgery in this patient. Okay, can you tell me about the prognosis of this patient if there turns out to be low-grade glioma? Prognosis good. Sir, sorry sir, I don't exactly remember the exact figures. Okay, फर्क टाइम कितना हो गया? कुछ पूरा है ताकि हम डिस्कशन करें इसमें बाकी. Last 1 minute है. Okay, टाइम पूरा हो गया ना? Okay, should I discuss the things with him? Yes sir, you can take. To discuss the things. अच्छा. Sir, you अच्छा, may इसमें take 2 minutes. डॉक्टर आमिर भी हैं, वो भी कमेंट कर सकते हैं साथ में. ठीक है. और इसमें examiner. आपकी कुछ चीजें ठीक थी, लेकिन इसमें जब सीजर की हिस्ट्री हो तो उसमें 2-3 चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है. इसमें जो ऑरा है वो आपने पूछा, और पोस्ट एक्टल एमनेसिया, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. उसके बेस पे यू कैन लोकलाइज द थिंग्स. और जब आप जो ना यानी आपने लोकलाइज कर रहे तो स्पीच जरूर पूछना होता है. ठीक है. फिर एग्जामिनेशन पे आपने बाकी सारी चीजें की, लेकिन आपने प्लांटर्स नहीं की, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. जो क्रेनियल केस हो तो प्लांटर उसमें बहुत इंपॉर्टेंट है. फिर बाकी जो हमारी डिस्कशन थी दैट वाज गुड, लेकिन अवेक एनाटॉमी की जो प्री रिक्विजिट्स से और जिस तरह करना चाहिए तो उसमें थोड़ी सी डेफिशिएंसी मुझे नजर आ गई. सो एनी हाउ ठीक था, इट वाज गुड. जी डॉक्टर आमिर सगीर. बस मैं तो ये कह माशाल्लाह लाल तो बहुत अच्छा एग्जामिनर है. ठीक है, बहुत आराम से लेके चलते हैं, आपको बताते भी, गाइड भी करते रहते हैं. ठीक है, आपको क्लियर होना पड़ेगा मारूफ अपने स्पीच में. ठीक है, जो लाल आपको बार बार कहते रहे, एग्जामिनर को जरूरत नहीं पड़नी चाहिए कहने की कि क्लियर करो क्लियर करो. और जो बेसिक पॉइंट्स हैं वो आप पहले मेंशन करेंगे. जैसे लाल ने बेसिक पॉइंट पूछा कि इंफॉक्शन में और लो ग्रेड में क्या फर्क होगा, तो इसमें आप यू शुड बी वेरी क्लियर. ठीक है, उसमें आप वो नहीं कर सकते इधर उधर की बातें. ठीक है, बाकी जो आगे की क्वेश्चन हैं तो उसमें तो इतना बड़ा मसला नहीं होता, लेकिन बेसिक पॉइंट्स को मिस नहीं कर सकते. ठीक है, थैंक यू. We have Dr. Vyas with us as well. Sir, welcome you, and I am unmuting you if you could add any comment. Dr. Vyas and Nagarajan. Sir, मैं आपको unmute कर. जी जी. Sir, if you could add any comment about this case, sir. Assalamu alaikum to all, dear Lal and Amir. How are you people? जी अस्सलाम वालेकुम. रियासत कैसे हैं? ठीक ठाक. अल्लाह का शुक्र है. This is a very controversial topic, and most of the clinicians in favor of doing the surgery, and most of them are waiting for and in observation. So low-grade glioma still is a controversial topic, and this is also very difficult for the students to tell clearly about in the one direction. I will go for the surgery and I will do the chemotherapy, radiotherapy. Though the patient, though the lesion is in the allocate area. So what should be the policy of the examination if this is a controversial topic, and if the student is telling us in the totally opposite to the answer which we are expecting, that surgery, chemo, and radio, if the student tell us that he will recommend the observation for the long period of time, repeated MRI 6 monthly or the 1 yearly, and he see the symptoms, and then because patient don't have any symptoms and he is neurologically intact, by getting the anti-epileptic drugs, he can enjoy his life. Okay, so what should be the answer when we are expecting an exam? Lal? Yes, आपने बिल्कुल इम्पोर्टेंट पॉइंट्स किए, लेकिन इसमें हमने चेक करना है बहुत ऑप्शंस को, उसको कितनी नॉलेज है, क्या आया कंजर्वेटिव बारे में उसकी कितनी नॉलेज है. ये स्टूडेंट तो इसी बात पे था कि मैं सर्जरी कर लूंगा. नहीं, शुरू में, लेकिन अगर एक एग्जामिनर शुरू में वो डिस्कस हुआ, कंजर्वेटिव भी डिस्कस हो गया ना, तो बहुत ऑप्शन डिस्कस हो गए. तो इसमें चूंकि हमने दोनों चीजें उसकी चेक करनी है ना, यानी हमने उसको सर्जरी की तरफ भी ले जाना है, हमने अवेक रेनाटोमी की तरफ भी ले जाना है. जैसे गुड केस फॉर अवेक रेनाटोमी, और हमने कंजर्वेटिव, तो ये सारी चीज हमने उसके डिस्कस कर दी. तो उसका नॉन सर्जिकल और सर्जिकल दोनों डिस्कस हो गई.
ठीक है। यस डॉक्टर यस सर कह रहे हैं टॉपिक आते हैं, मैं समझता हूँ एग्जामिनर्स को भी बड़ा पोलाइट होना चाहिए स्टूडेंट के साथ, क्योंकि स्टूडेंट्स तो डेफिनेटली इस टाइम पे वो घबरा जाता है कि मैं कौन सा आंसर दूं। नहीं उसको बिल्कुल यस यू आर राइट, और ये है लोग रेगुलर में, लेकिन ये है कि दोनों चीजें हमने चेक करनी है उसकी। इन द स्टूडेंट्स नो अबाउट द थिंग्स कि भाई ये इसमें कंजर्वेटिव भी है और सर्जिकल दोनों ऑप्शंस हैं, और स्पेशली जो सच पेशेंट में जो सर्जिकल में जो रिसेंट एडवांसेस हैं, तो यस यू आर राइट, वो जो भी बताएं, लेकिन हमने चेक तो सारी चीजें करनी है उसकी। डॉक्टर अतीक भी ज्वाइन कर चुके हैं, तो मैं उनको भी अनम्यूट कर रहा हूँ, सॉरी। Okay, Atik, welcome. Atik has major family commitments today, so I'm very pleased that he's taken time out. And in fact, Riaz, agar aap thoda baith sake, maybe the next case we can give Atik so he can go back to his family. Before we do that, I just want to go back. For a minute to what Lal was saying to Maruf earlier. कि आपने स्पीच की नहीं बात की. So you know, मारूफ, शुरू में सबसे पहले फर्रुख ने भी आपसे कहा, उन्होंने कहा कि प्लीज आप relevant examination करें. You know, stay with the relevant things. You know that the patient has a seizure, and apart from that, there's very little else. This case, the cranial nerves are not that important. What's more important is difficulty in naming objects, for instance, or a olfactory or visual aura, or what the boys call lobe signs, matlab कहने के stereognosis and spatial problems and dressing problems, stuff like that, and then behavior problems. And quite honestly, आपकी जो हिस्ट्री थी ना, उसमें ये चीजें एम्फसाइज नहीं थी. वेबर भी है और ये भी है और swallowing भी है. But though you've already told us, or you know that this is a supratentorial case, so you've got to concentrate on the supratentorial aspects of the questioning. So Maruf, I just wanted to make that point to you. Okay, sir. So Dr. Atik is here. So Dr. Atik will take the next case. Sir, मैं आपको unmute कर रहा हूँ. And we have a candidate, Dr. Sajjad, with us, and he will be doing the long case. Dr. Sajjad. डॉक्टर सजाद, आप किस नाम से हैं? क्योंकि पहले आपका नाम शो हो रहा था. ये सजाद के नाम से. हेलो, अस्सलाम वालेकुम सर. जी वालेकुम सलाम, कंटिन्यू करिए. Dr. Atik, we have 25 minutes for this case. उसके अंदर we have 5 minutes for history and examination part, जहाँ पे जो candidate है he will tell के उसको history और examination के अंदर क्या focus चीजें चाहिए. Only the focus and relevant part वो बताएगा. उसके बाद from there we can move towards the justification of his differentials and investigation, and in the last management, sir. So 25 minutes max for this case, sir.
Okay, thank you very much, Farooq. Thank you, Professor Juma, and my other colleagues, Dr. Riaz, Dr. Lal Rahman, and Amir. Thank you for inviting me in this excellent virtual meeting. I think it will turn out to be very positive. So let's start with this. जी डॉक्टर सजाद. यस सर. अस्सलाम वालेकुम. मेरा नाम डॉक्टर सजाद है. मैं आपकी बीमारी के बारे में आपसे कुछ सवालात पूछूंगा और मुआयना भी करूंगा. इजाजत है जी? जी जी. आपने बताया कि आपके कमर में दर्द है 1 साल से. और डॉक्टर सजाद आप सिर्फ फोकस चीजें आप पूछेंगे. डॉक्टर अतीक विल आंसर दोस थिंग्स और बहुत क्विकली आपने चीजें बता दी. Okay, sir. There is a lower back pain and bilateral lower limb weakness. Other than that, the sphincters are intact or involved? Sir, can you hear me? Hello. Hello. Ji, can you hear me? Yes, sir. Okay, you can ask. Sir, I asked about the sphincters. The first complaint is lower backache and other is the bilateral lower limb weakness. Other than that, there is any sphincter involvement or not? Can you repeat your question again? Sir, I am asking about the sphincters of the patient. Either urinary or fecal incontinence is present or absent. Okay, मैं आंसर करता हूँ. Sphincters are intact. Okay. There is any trauma history? No, there is no trauma history. Any weight loss? No. Any fever? No. Any TB contact to the patient or patient having any TB? Not to his knowledge. Okay. The patient said there is a lower back pain. The lower back pain is for 1 year. It started gradually and increased with the passage of time? Yes. Okay. Where patient localized the pain? It's lower, it's a written lower backache. No? So it's around the lumbar region. Okay, okay. Lower. And there is what type? It is gradual in onset and it increased with the passage of time? Already answered you. Yes, okay. I want to ask about the timing of the back pain. Either it's more in the night or when patient wakes up in the morning. He feels tired at the night और उसको pain भी थोड़ा ज़्यादा होता है. Okay, he having night pain. The pain is intermittent or continuous in nature? It's kind of continuous. Okay. There is any aggravating factor like it increased by coughing, sneezing? उनको नहीं पता चलता. Okay. And relieves by taking medication or anything? थोड़ा relief होता है medicine से for very short period of time. Okay. Okay. ये जो पेन है ये रेडिएट होता है लोअर लिम्ब को या सिर्फ बैक एक वहीं पे बैक पे ही है? Mainly बैक पर ही है. अच्छा, ये हाथ लगाने से इसमें दर्द होती है? No. टच कर हाथ लगाने से दर्द नहीं होता. ठीक है. और इसके अलावा ये जो कमर का दर्द है ये किस शिद्दत का है? बहुत ज्यादा है, दरमियाना है, थोड़ा है? दरमियाना है. दरमियाना है. ठीक है. इस तरह का दर्द पहले तो कभी नहीं हुआ है? नहीं, बस 1 साल से ये मुझसे. ओके. अच्छा, इनको जो है दोनों लिम्स में भी लोअर लिम्ब में वीकनेस है 3 महीने से. ये एक पाँव से शुरू है, दोनों से एक ही वक्त में शुरू हुआ है कमजोरी? तकरीबन दोनों में एक साथ ही हुआ है. कुछ एक दिन का है जो कि याद नहीं है. अच्छा, ये नीचे से कमजोरी शुरू है, ऊपर से शुरू है? पूरी टांग में ही हुई है. ओके. अच्छा, इसमें अकड़ाव है, पाँव में अकड़ाव है या मतलब अकड़ाव नहीं है? अब तो चलने में इशू है बहुत ज्यादा. तो ये कब से आपको चलने में इशू है? 3 months. ये 3 मंथ से जब से ये हुआ है तो उसी वक्त से आप चल नहीं सकते? शुरू में थोड़ा बहुत सपोर्ट के साथ में चल रहे थे बट नॉट नाउ.
नहीं। अच्छा, आपको सुनपन महसूस होती है? टच करे तो महसूस होता है आपको टांगों पे? कम हो गया। अभी कम हो गया। कहाँ तक कम हुआ? वो बहुत ऊपर तक, कमर से ऊपर तक कम हुआ है या नीचे तक कम हुआ है? ठीक से तो नहीं कह सकते, लेकिन शायद पेट के आसपास। ओके। अच्छा, आप बताइए, आपने टीबी कांटेक्ट का नहीं बताया, आपकी फैमिली में किसी को टीबी नहीं हुआ है? जी नहीं। आपको बुखार भी नहीं है? नहीं। अच्छा, इसके अलावा आपको खांसी वगैरह तो नहीं होती ना? नहीं। बड़े पेशाब में कोई मसला तो नहीं है? खून वगैरह तो नहीं आता? नहीं। अच्छा, आपके खानदान में कोई दोनों कानों से बहरा तो नहीं है? नहीं। डॉक्टर सजाद, फोकस अच्छा, आपने लेना था, आपके 6 हाथ मिनट आपने हिस्ट्री में ले लिए। ओके, आप सॉरी। अच्छा, ये अब ये बताएं, आपके हाथ बिल्कुल ठीक है? जी बिल्कुल सही। हाथ और बाजू ठीक है? जी। सो गर्दन दीज में आर तकलीफ द भी नहीं होती? so Yes. so these are the history findings. Dr. Atik, over to you. डॉक्टर अतीक, आपको आवाज आ रही है सर? जी आवाज आ रही है, मैं जरा पढ़। So what is your impression by just having a history on examination? So can you summarize? Yes, he is a 27-year-old male patient. He having lower back pain for 1 year, and it's more in the night time. And there is no aggravating factor. However, it relieves by taking medication. And he also developed bilateral lower limb weakness for 3 months, for which he is unable to perform his daily activities. So what do you think? What is wrong with this young patient? What is your impression about listening this history? Where do you think there is the problem? Yeah, sir, he is a 27-year age, and he having a long history, 1 year history of pain. So I am placing any neoplastic lesion first, then any degenerative disease or infective lesion. What type of neoplastic lesion which comes into your mind with the age of 27-year-old patient, and which is it's gradual and progressive? Sir, it may be any intradural extramedullary or intradural intramedullary lesions. So where do you think that the lesion is? Sir, I would get on your history and examination. On your history and examination, where do you localize that if this is any neoplastic lesion, which part of the spine it has involved? Generally, patient having lower patient localizing the pain at the lower back, so most likely patient having lesion at the level of conus or below that. Any particularly specific findings which give you a clue that this is pain which is radiating? Yes, the patient having radiating pain. Other than that, the patient also having night pain. So which makes suspicious for any neoplastic lesion more. What is the reason of having a night pain that you are considering that the lesion there is a lesion? Sir, the pain for this purpose that at the night time there may be venous engorgement, and the dura get compressed between the lesion as well as the venous plexus. So that's why it causes compression on the dura. So that's why patient gets pain more at the night time when he lays back. Did you ask about the sphincters? Yes, sphincters. Yeah. My first question was, sir, about sphincters. So sphincters are intact or? Yes, intact. Okay. So is this? Did you ask about the pain aggravate with walking or with movement? Yes. I asked, but he said that patient don't know any aggravating factor. However, it relieves by taking medications. Mm-hmm. So it aggravates on walking? No, he didn't told anything about aggravating factors. I asked about coughing, sneezing, or any other aggravating factors. He said the patient doesn't
respond. On your examination, what are your positive findings on this patient? Sir, I have to do the general physical examination. So these are the examination findings. Dr. Sajjad, आप इन findings की basis के ऊपर Dr. Atik को आएगा दें further. Okay. So what are your positive findings on the examination? The left plantar is upgoing, sir. Yeah. So where do you think there is the lesion now? The patient having no spinal tenderness and the power is reduced bilaterally, and the reflexes are there is hyporeflexia and sensations are intact. Plantars right down going. So maybe lesion at the lower lumbar region, sir. I would also want to do the SLR and any spinal tenderness, as they already mentioned that there is no tenderness, and other than that, the rest of the findings are negative. Okay, sir. So the power is 1/5 on the left side and 3/5 on the right side, with sluggish diminished reflexes, and sensation is intact, and the plantars are right is downgoing. So these are your findings. So where do you think where is the lesion? Sir, it might be at the level of conus. So if it is at the level of conus, then don't you think that with this long history, the inspectors are spared? Why not this inspectors? Yes, sir, patient having mixed signs of, so that's why for that purpose I am locating it to the conus as patient having long history as well. Yes. So on the basis of this examination, where do you think that the lesion is? Sir, at the level of conus, maybe extramedullary. Why you are emphasizing that the lesion is at the conus? What gives you? Because patient having mixed signs, sir. Patient having mixed, and the left plantar is going upper motor neuron and lower motor neuron sides. Also, that reflexes are sluggish. Power is also reduced. So the anatomical localization, I'm interested in that on your examination there are one or two clues which gives you that the motor level is this. So which motor level is this? T12 L1 level, sir, coracolumbar. So okay, but what about the sensation? Because the sensation is intact, okay, and the plantars are going down. So if it is above T12 or 12 at the level of cord, then the plantars must be upgoing. Yes, it should be upgoing. Not going in. Okay. So how will you proceed now? What further investigation would you do? I want to get the MRI lumbosacral dorsolumbar spine with and without contrast. After that, I would decide other investigation on the basis of MRI. You have to be very much clear that what investigation you are going to advise, because you see, you initially said it's lumbosacral spine and then you dorsolumbar spine. No, so lumbosacral spine. So what other examination would you like to do in this, apart from this examination which has been posted here? Yes, apart from that, what other part of the examination would you like to, examine this patient if I give you one question to ask? Sir, I would already ask in examination, I would check the motor and sensory system gait of the patient, and I will palpate the spine. How will you check the gait? How will you check the gait? Oh no, sir. This patient is unable to move, so not in this patient. However, this will help me. Obviously, the power is 1/5. You cannot ask the patient to walk. Yes.
See, this is out of question that you are going to check in, the gate. No, sir. Sorry, sir. I am unable to check the gate because power is reduced bilaterally. You know, the problem in this case is to exactly localize the lesion. So because there are obviously mixed signs. You are quite right saying that there are some lower motor neuron signs, and then you have a motor level at this. So my question is again that what thing you are going to elaborate in this patient to confirm your examination, as you have already mentioned that the lesion is at the level of D12 or conus, then what examination will help you to localize the lesion at this level? Tone, sir, I would like to check the tone of the patient is hypotonia, and sensory examination is very important. However, the sensory system is intact. And would you not go for your abdominal reflexes? Yes. I definitely check the abdominal reflexes. That is I'm interested in, because Yes. you have to rule it out. Yes. Can you tell me the level of abdominal reflexes? Sir, the umbilicus is at level of T10, and above it is C7, T8, T9 level, and below that T11 and T12 level. Okay. And superficial reflexes I will check over there. Anything else you wanted to examine, or you would like to ask the examiner in this patient? Abdominal reflex spasticity. Sorry, sir. What about joint position sense? Yes, sir. That is included in my examination. Throughout that, I will check the joint position and vibration also in this patient to exclude any lesion in the posterior cord, means dorsal column. So I would definitely check throughout in my examination. When I'm examining the sensory system, I will check the joint position and vibration sense bilaterally. Can you tell me the tracts in the posterior column? What are the tracts which take the joint position and vibration? In sir, dorsal column. Yes, dorsal column. There will be vibration and joint position, 2-point discrimination. Name the tract. What are the two tracts which take this? Medial meniscus. No, there are the other name. There are two names which are fasciculus gracilis and fasciculus Yes, cuneatus and gracilis. Yes, sir. They are cuneatus and gracilis for yes, sir. Okay. So 7 to 8 minutes are remaining. We can move towards the investigation and management. Investigation, please. Can you tell me? Okay, you can continue with the investigation. अगर है तो लगा दो, करो. So you may ask him what kind of investigation he wants. MRI. Yes. With and without contrast. Okay. Sir, these are the MRI T1 as well as T2 weighted images, which is showing an on T1 weighted images there is an hypointense lesion at the level of T2 extended into T3. L3, L4 level, and there is also abnormal findings at the level of at the vertical level of 2 and L1 are L2 and L1 are fused, and other than that, the lesion is hypointense on the T1 weighted images and hyper intense on the T2 weighted images, and causing obliteration of the CSF signals and causing cord compression. So, canal compromise, sir. Sorry. So what do you think? What is this? Sir, this showing hyper intense signals on T2 weighted images, and sorry. Is it an intraaxial lesion or Sir, an extraaxial lesion? T1
What do you think about this? Where it is arising from? Intraaxial lesion, sir. What intraaxial lesion at this level? Sir, ependymoma maybe. What type of ependymoma occurs at this level? Maxillopapillary ependymoma. Anything else? Maybe, sir, intramedullary, extramedullary intradural lesion. Okay. So what goes in favor of intradural and extramedullary lesion? Sir, patient having no... On the radiology, on this radiology. On radiology, patient having cystic lesion. So as the on T2 weighted images, it was hyper intense. So that's why I was taking it schwannoma maybe an cystic, but in intramedullary maybe an maxillopapillary ependymoma. Okay. Anything else which goes in favor of schwannoma or any nerve sheath tumor? Yes, sir. What? Neurofibroma, sir, or schwannoma? Yeah, but on the basis of this radiology, what do you think that this is, why it is, what radiology is explaining that? Is there any possibility of neurofibroma or nerve sheath tumor? Sir, neurofibroma usually goes within the foramen with the with the nerve, and the schwannoma is usually eccentric and they arises from the Schwann cells and they only displace the nerve and don't go within the canal. Can you look at this contrast axial view again? Yes. If you look at this axial view, can you show me the neural foramina? Yes, sir. It's going within the neural foramina on the right side. Okay. So this is one of the radiological findings which gives clue that possibility of nerve sheath tumor. Yes, sir. So how will you approach this lesion? Sir, I will first of all I will consult the patient. I will consult the patient. After that, I will admit the patient. Okay, you have counseled the patient. You have taken the patient to the OR. Now started from there. The patient is in the OR now. What's your approach for this? After getting the baselines of SSCP and MEP monitoring, I will give general anesthesia to the patient, IV anesthesia. After that, I will make the prone position of the patient and make him in the frame. Then I will localize my lesion on the basis of intraoperative fluoroscope. And after that, I will give a midline incision, and me being in the midline plane, I will expose the spinous process of one level above and one level below, and I will do the laminectomies of 5 at the level of L3, L2 levels, and I will expose the dura, and after that I will under SSCP and MEP monitoring, I will excise the lesion. So, any other tool which you would like to do, which will help you in? Yes, sir. Intraoperative ultrasound does help, and SSCP and MEP monitoring are very important as to decrease the chances of complications. And intraoperative ultrasound we can use. And microscope, microscope is very must. Very important. Microscope is, you have to tell me the steps, because when you do the laminectomy, when microscope come into play, that is the most important thing, and you have missed that. While durotomy, I will bring the microscope on the field. After that, under microscopic view, I will excise the last 1 minute. Okay. So what are the complications?
Sir, complication may be cord damage, and there may be hematoma formation, may be CSF कॉर्ड इस लेवल पे आएगी, इस लेवल पे कॉर्ड होगी? तो ऊपर अगर हम मतलब ज्यादा लेमिनेक्टोमी करें ऊपर, आपने तो लेमिनेक्टोमी L2-3 के लेवल पे की है, वहां तो कॉर्ड होती नहीं है. No, sir. CSF leak, infection, and persistence of these symptoms. Other than that, there may be मतलब उसमें सर hematoma formation और CSF leak are more important. नर्व रूट इंजरी नहीं हो सकती जब आप नर्व रूट से डिसेक्शन करेंगे? Yes, sir. Nerve root बोनस की इंजरी हो सकती है. Yes, sir. Vascular injury. Yes, sir. Patient already having power of 1/3. Yes. ठीक है, तो ये एक्सप्लेन करेंगे ना आप पेशेंट को कि देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि आपको ये डेफिसिट हो सकता है. अगर आपका एग्जामिनेशन अच्छा है, आपकी रेडियोलॉजी अच्छी है, तो यू विल टेल द पेशेंट दैट ही माइट हैव दिस वीकनेस और post-operative, yes. Persistence of the weakness, yes, sir. So then ये सब करने के बाद फिर क्या करेंगे आप? Sir, then we will move toward the follow-up, in which we will have the histological follow-up and clinical follow-up and rehabilitation of the patient, and physical rehabilitation as well as psychological rehabilitation. हिस्टोलॉजिकल फॉलोअप क्या मतलब होता है? Means sir, histology को हम follow करेंगे कि क्या आता है, then we will counsel the patient for the further rehabilitation and follow. Is there any possibility that while you are dissecting the lesion, your SCCP monitoring or your electrophysiological monitorings will not allow you when you try to excise the lesion, and that electrophysiological monitoring will not allow you to take the lesion out more aggressively or completely because it is attached to the nerves? Then is there any significance of follow-up patient? Yes, for recurrence if you leave this part of the tumor, then is there any possibility of following up the patient? There will be recurrence of the tumor that may cause. ये बताना था ना आपको. ये follow up में आपको पूछा था histological follow up, तो आप बताएंगे कि sir, if there is any possibility that is a recurrence हो सकता है, ठीक है? Because this is enhancing and a possibility है कि ये turn out to be a slightly aggressive lesion. So yes, you have time to is follow. up. I need to interrupt you guys. हाँ, या बिल्कुल आप पूछें. Thank you so much, Dr. Atik. If you want to give any comment, a very short comment on this case, and then we can move for the next case. I think this is a very good case, first of all, and as a student, one student should be more focused on the examination findings, and he need to understand the examiner, what the examiner is asking, and specifically बड़ा simple सा straightforward सा भी case है अगर radiologically देखा जाए, लेकिन slightly difficult इसलिए आज से था कि ये जाहिर है कि मिक्स साइंस आ रहे थे इसमें, लेकिन आपको एज ए स्टूडेंट पता होना चाहिए कि मुझे इसको डील किस तरह करना है या नेगोशिएट किस तरह करना है. यानी अगर मुझे लोअर मोटर और अपर मोटर न्यूरॉन के मिक्स लीजन्स आ रहे हैं जो कि इस तरह के लीजन एग्जाम में आ सकते हैं, तो मुझे अपना एटलीस्ट एग्जामिनेशन जो है ना वो पूरा करना है. अगर आप एग्जामिनेशन मिस करेंगे, बेसिक एग्जामिनेशन मिस करेंगे और वो एग्जामिनर आपको प्रॉम्प्ट कर रहा है, हर चीज कर रहा है, तो आपके नंबर कट रहे हो. आप समझते हैं मेरी बात? आपको मतलब एग्जामिनर आपको प्रॉम्प्ट कर करके लेके जा रहा है एग्जाम की तरफ के कि आपको ये पूछा जा रहा है कि ये क्या जवाब देना है आपने, और आप वो चीजें मिस कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये कि वो आपके लिए एग्जाम में फिर मुश्किल होगी कि उसको इजीली पास कर सकें, क्योंकि आपने कई दफा एग्जाम में कुछ चीजें आपने मिस की, बड़ी सिंपल सी थी जिसको आपको बताना चाहिए था, तो वो प्रॉम्प्ट में आपने उसको एक्सेप्ट भी किया कि हाँ वाकई ऐसा हुआ है. So you have to, the examination should be at the grip. Basic तो यही examination आपका और history examination आपकी grip पे है, then you can go further for the discussion. ठीक है? Well, otherwise I think it's you have done nicely, but I think you need to work hard on your examination.
Okay, thank you. डॉक्टर लाल, अगर आप Thank you जुमा so साहब much, सर, sir. आप सर कुछ कहना चाहें, कमेंट करना चाहें इस पे? जी आतिफ Sir, साहब, we are अस्सलाम actually वालेकुम। running short of time, and Dr. Salman has to leave, and Dr. Salman is next. So, if we can proceed with the case, sir. ठीक है, Okay. मैं Dr. Lal, मुझे इजाजत है, मुझे भी जाना है, thank you तो so आई much, sir. लीव यू I गाइस know हियर एंड इट्स you are रियली committed वंडरफुल, and थैंक यू। you joined, so thank you so much, sir. सर अगर सुन रहे हैं मेरी बात जुमा साहब, तो सर को मेरा सलाम कहिए और कहिए कि मुझे जाते हैं, मैं नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह जरूर आऊँ। Okay, thank you so much. Dr. Saab? Before we go on to the next case, I would like to thank all the examiners. It's a Sunday; they all have family commitments, and Dr. Salman has sacrificed his family commitment to be among you all, and I think you should all take great use of this time. He's one of the senior examiners. So can we have his case, Farooq, Dr. Salman's case, and who's doing the next case? Dr. Osama will do this case. Dr. Osama, So you may Dr. unmute Osama? yourself. Yes, sir. Everybody. So I'm just sharing the screen and then over to Dr. Salman. Sir, आपको screen हो रही है share sir? हाँ बिल्कुल। उसामा, Sir, this is the अस्सलामुअलैकुम। case. वालेकुम सलाम सर, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। You want to start? This is 45-year-old male patient presented to us with the history of neck pain radiating to both arm, hand, and associated with sensory changes. So, should I ask question from Dr. Farooq or Dr. Dr. Salman शायद आपको आंसर देंगे जी। कोई मसला नहीं, कुछ बना लेंगे, कोई मसला नहीं, no problem, carry on. Okay. As the patient has pain, I will like to ask further first about the weakness. Is there any weakness along with this pain? अब ये एक मिनट मुझे देखना पड़ेगा. I have it somewhere here. 1 second. नहीं ये वाला तो मैं शेयर कर लेता हूँ. Case number 3. Okay. तो हाँ, हल्की सी जो है लेफ्ट एल्बो में वीकनेस है, लेफ्ट साइड. Okay. Is there any history of trauma in this patient? No history of trauma. Any history of a TB contact or history of fever from last? Nope. No. So I would like to further inquire about neck pain. How long is this neck pain to the patient? Duration of the pain? 2 months. 2 months. How does this pain started? Is it started all of a sudden or gradual? What was gradual onset? Was there any history of any weightlifting or any other event before this pain started? No. 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 So it started at what time of the day? The patient doesn't remember. Patient doesn't remember. Is there any timing association of this pain in the whole day? There is no time. It's there all the time. It's all the time. Is it a continuous pain or it is an intermittent? It sometimes goes and come back? Oh, it comes and goes as well. What is the nature of the pain? Is it a current-like association of pain? There's dullness pain or? Patient just says, patient has the pain, can't describe it. Can't describe. So as there's mentioned that it is radiating to both arm and hand, can patient tell me that how does it radiating? What is the pathway of the radiation? It goes down to the hand on the left side more than the right, although it's on both sides. It's more on the left side. Any specifically on the, does it go to thumb? Does it go to the index finger? It goes to the hand. That's what patient is saying, can't describe. Okay. So can the patient tell me about aggravating factors? Is there any aggravating factor?
I think, any time that the patient is working, the pain gets worse. Every time patient is walking, pain gets worse. Okay, what any relieving factors? Yeah, when patient is lying down resting, pain goes away. Patient goes away. Okay. If the patient can tell me, is there any tingling in his hand? Yes, there is numbness. There is numbness in the hand, and which part of hand specifically? It goes up to the elbow. It goes up to the elbow. Okay. What about the lower limb? Is there any involvement of the lower limb with this pain? No, there is no pain in the leg. There's no pain. So I'm asking about lower limb. Yeah, no pain in the legs. No pain. The legs there's no sensory or motor deficit in the leg. No. Sphincters. Normal. All right. So can I ask about if patient have any problem in swallowing? No. No. Patient have any problem in balance? No. Anything that okay, I missed one thing in a hand, that if patient have how's the patient or current condition of the patient, that can he hold anything from hand, or he can eat, or he can button up his hand from hand? You can, yeah. Yeah, okay, then after this my HOPI is complete, I would like to ask for other family and physical other histories, and then I will go for my physical examination. What family history would you like to know? I would like to know, is there any kind of lesion, any kind of this kind of pain associated in family, or there anyone or anything in hematomas in the family? No. Okay. I already asked about the TB history and rule out any weight loss, so there's no weight loss. Okay, nothing. Okay. So I would like to proceed to my physical examination. Then can we see the exam? Sorry? No, we'll just, next slide, please. As the power is 4/5 beyond the elbow on the left side, Sperling is positive on the left side, sensation is intact. Okay. So there is radiating pain, and as well as Sperling is positive on the left side, sensation is intact. So I would like to ask for reflexes. How is the reflexes of the patient? I think there's the normal reflexes. All reflexes. How about the tone? Normal. Normal, and all sensations are intact. And then Hoffman? Negative. Hoffman is negative. Is there any tenderness when the patient moves his neck right to left? Yeah, it's painful every time patients move the neck, yeah. Okay, is there any prominent swelling at the back of the neck? No. All right, so after this, the lower limb is normal, right? Cerebellar signs and lower cranial nerves. I would like to ask about cerebellar sign and lower cranial nerves and the brainstem signs. Okay, there are no cerebellar, brainstem, or lower cranial nerve signs. Okay, and the lower limb is totally intact as per history, and I would like to ask it about an examination as well. Dr. Osama, these are findings on the examination. These are the only findings you can have. Okay. The rest of the findings are, I would assume the rest of the findings are normal. Yes, you should. Okay. Yes. So on my history and my physical examination, I would like
to proceed further then. So how does What it would you gonna like work? to do? Like, I would like to do relevant, specific, and baseline investigation. In relevant, I would like to have MRI brain, MRI cervical spine with craniocervical junction. What's your differential diagnosis here that you're thinking of getting an MRI cervical spine? Here is any compressing lesion, which is most probably on the left side of canal, spinal cord, cervical spinal cord. Okay, so is that your differential? My differential is a compressive lesion, which is probably in the cervical area. I can further elaborate. So what kind of compressive lesions? Yeah. And they can be a degenerative spine in this age. It can be a disc over there or OPLL. As patient does not have any nighttime history, his pain get relieved when he lay down. So I would not say that the possibility of any tumor is very low. But there's a radiculopathy, so I can rule in intradural extramedullary tumor. Okay. So is that your differential? Just one? Degenerative? Degenerative, other one is tumor. So in degenerative, what stuff that you can get? One is disc, okay. What else? The other one I can get stenosis of the canal. Okay. Ligament flavum hypertrophy. How common is ligament flavum hypertrophy in cervical spine? Sorry, sir. It is not common. It's okay. You just need to be confident and say a few things which commonly will cause neck pain and brachyalgia. This is a very simple case. There can be degenerative spine and this there can be intradural extramedullary tumor. As you say, the chances are very low on that. 2 months history, not many signs. So it's highly unlikely. Yes. Agree. Yes. Okay, so you need an MRI? Yes, sir. How about an X-ray? Would you do an X-ray? X-ray will give me a limited information, but I will need it X-ray to later on if there's any chances of to see straightening of the spine or any other thing which can help me to further proceed to an MRI investigation. How is X-ray different from MRI? Why would you like to get not like to get an X-ray? X-ray just give me some information about this bony anatomy of a spine, but it won't give me any parenchymal detail of spinal cord or nerve root or anything. Okay. Would you do any labs? Yes, I would like to do a baseline investigation. As the age is 45, I'm not sure about his smoking history. I would like to prepare this patient if ever further needed. Okay, let's have a look at the MRI, as you say. Can we get the MRI, please? Okay. So this is an MRI of cervical spine, which shows T1 and T2 weighted images. On T1 weighted images, there's 2, 3, 4, 5, 6. There is this at the back, hypointensity, T1 hypointensity at between C6 and C7. The same lesion is replicating in C2 area. There's straightening of the spine, and there's an obvious compression of the spinal cord. I would like to see the other images, T1 with contrast, if ever it is available. You want to get a T1 with contrast on this image? That would not help me, but as it is a disc, but still I would like to do it too. यार तुम क्या कर रहा है यार क्यों T1 with contrast में simple से case में? Sorry, sir.
कोई खास वजह है जो T1 with contrast? Do you routinely get for disc T1 with contrast? No, we don't. तो जो करते हो वही बताओ तो आसानी होगी, वरना फंस जाओगे, है ना? ठीक, sorry sir. So whatever we do routinely, we should do. Okay, so you need to have a look at the axial. That's what you want. Yes. Okay, so let's have a look at the axial. So this is an axial cut which shows what is it? This protrusion, axial cut of C spine, cervical spine image. What kind of axial cut? It is T1. Is it T1? T2, sorry. T2. Okay. So T2. T2 where the image shows disc protrusion or more on the left side, which is compressing the foramina, and it is also compressing the spinal cord on the left side. It is blocking a neural foramina as well. Okay. So what do you need next? Can I get sagittal, left sagittal cuts to see the foramen? So in axial cuts, can you see anything you want to get a sagittal cut for the left side? There is a compression of a foramen on the left side. Anything on the right that you want to get that? Yeah. Anything on the right? Sorry, sir, I cannot appreciate any. So we have for example, so what's your final diagnosis after looking at these images? It is C67 disc, which is compressing the left. Okay. Cervical nerve. So now what are you going to do? We can prepare the patient, and at the same time, they can operate this patient. We will manage it first as the patient. We can manage this patient surgically, as there's quite big compression on the left side. All foramen is blocked, so we can do interiorly, anterior cervical discectomy and fusion. Can you treat this patient conservatively? We can give a trial for conservative management, but as there is quite big compression, which is choking up whole foramen, so. Okay, you were this patient. What would you like for yourself? You'll have surgery? I would, after a trial of conservative management, if my pain would not be go away, then I would offer. How long would you give? What is conservative treatment? From 6 to 8 weeks of medical therapy, which includes pain analgesic, muscle relaxant, and rest. What painkiller would you use? Analgesic, mostly acetaminophen. Acetaminophen. Why would you use acetaminophen? Is there any evidence that it works better than others? Not specifically. It is readily available, and on counter, that's where we can prescribe that. So, for example, if you have a tummy problem or you have asthma, you would use acetaminophen. No. It won't. At that moment, it will worsen the stomach problem and my asthma. Okay, so the recommended medicine for pain is a COX-2 inhibitor. Unless you have a serious tummy problem, then you may use opioids in a small number of cases, but it's because it doesn't cause problems with kidney or less problems with tummy as well. So that's the recommendation. Yes. Is there any evidence that muscle relaxants work? As per literature, they say it won't work. Okay. Would you give anything else to this patient? We can give steroids. You'd give steroids. Is there any evidence that steroids work? No, there's no evidence for steroids. So why do you want to give steroids if it doesn't work? Okay. So what else? Which other medicine you can use here? रूटीन में यार एक 20 चीजें लिखी होती है हर प्रिस्क्रिप्शन पर, कुछ तो होगा ना काम की चीज उसमें. एनाल्जेसिक हैं, फिर पेन मसल रिलैक्सेंट हैं, साथ ये मोस्टली देते हैं. अच्छा, कोई नर्व के लिए कोई मॉडिफायर्स होते हैं जो दे सकते हैं जो नर्व का पेन कम कर सके?
Gabapentines are the one which we can give her. Okay, तो कोई रोल है उसका, कोई प्रूवन रोल है? In diabetes न्यूरोपैथी उसमें है, कोई भी किसी भी न्यूरोपैथी में उनका रोल है. यस हाँ, तो बिल्कुल रोल है, तो you need to use it along with it. The only thing is कि किसी को किडनी इश्यूज है तो नहीं यूज करते, ठीक है? But trial should be given for at least 6 to 8 weeks minimum. Now up to 3 months, majority of the patients would settle down during this time. और फिर that's we do that. Okay sir. फिजियोथेरेपी करोगे? फिजियोथेरेपी सर आफ्टर पेशेंट की जो लिमिटेड रेंज ऑफ मोशन है वो इंक्रीज हो जाएगी, तो फिर उसके बाद हम उसे फिजियोथेरेपी का ट्रायल भी देंगे. तो अभी को acute episodes के हीट पैड और टेंस काम करती हैं? Heat pad and TENS they does work, they reduce the intensity of pain. So you need to do all that, and if you do और फिर posture, क्योंकि posture आमतौर पे लोगों का खराब होता है इसलिए प्रॉब्लम. चलो anyway तुमने कर लिया conservative treatment, patient नहीं ठीक हो, अब क्या करेंगे? Then after that we can offer him a surgery. There are we can say surgery anterior cervical discectomy. Okay, so काउंसल अगर करना हो पेशेंट को, मैं पेशेंट हूँ, मुझे क्या बताओगे कि ये मैंने किस तरह क्या करना है? If you are a patient, then I will let you know that there is a disc which is compressing the spinal cord as well as the nerve exiting at that level. So we need to, as conservative management is failed, we need to decompress it. For that decompression, we will give a small incision in front of the neck, which won't be that much visible. And we'll go on inside in between the vertebral bodies and take out the soft tissue which is compressing, soft tissue or disc which is compressing the spinal cord and neuroforamina. There is post-operatively there is a chance of dysphagia or harshness of voice, but we'll try our best to minimize it. C6-7 पर तुम्हें dysphagia harshness of voice मिलेगी? नहीं सर. किस लेवल पे मिलती है? सर वो 3 लेवल 3 से लेके आगे अपर लेवल से लेके 5 तक ले. और ये और कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकती हैं? और सर इसमें हमारे any visual injury which is esophagus or trachea or the vascular injury which includes carotid artery, intrajugular vein and यार इतने सारे रिस्क हैं और आप मुझे कह रहे हैं सर्जरी करा लो है. डॉक्टर साहब आप कन्विंस तो करें मुझे. क्या रिस्क है? इन्फेक्शन का क्या रिस्क है? इन्फेक्शन का सुपरफिशियल इन्फेक्शन का सर लेस देन 1% है, 1% ऑलमोस्ट, एंड द डीप इन्फेक्शन का 0.5% रिस्क है. But they are too small and the benefits are way much than the risk of all these together. वो कह रहे हैं मेरा तो हल्का सा दर्द है, आप कह रहे हैं मेरा एसोफेजियल टेयर हो जाएगा, मैं क्यों करांगी इसे? एसोफेजियल टेयर हर केसेस में नहीं होता, उसमें मिनिमम चांस है एसोफेजियल टेयर होने का. विल ट्राई आवर बेस्ट के जो हमारे पास. वो क्या रिस्क है आपके हाथों में? क्या रिस्क है आप बता दो. सर कितना रिस्क है? 1 to 4%. नहीं यार 100 है, ठीक है. और इसीलिए इन्फेक्शन का रिस्क भी 1 in 600 है. इन्फेक्शन सिर्फ उनमें होता है जहाँ एसोफेजियल इंजरी होती है. यहाँ कुछ काट नहीं रहे तो रिस्क ना होने के बराबर होते हैं इन्फेक्शन के. ठीक है, सही सर. ओके, सो पेशेंट तैयार हो गया, आपने सर्जरी करनी है. आपने डिस्क निकाल दी है, अब डिस्क क्या करेंगे? मैंने डिस्क निकाल दी है और फिर उसके बाद हम क्या करेंगे? कुछ और करेंगे? आप खड़े में एग्जाम अभी ऑपरेशन थिएटर में डिस्क रिमूव कर दिया, अब क्या करेंगे नेक्स्ट? तो हम उसमें फिर वहां पे केज रख के फ्यूजन कर सकते हैं उसकी, और उसे पोस्ट ऑपरेटिवली हम तो कोई एविडेंस है काम करता है वो? सिंगल लेवल में कोई एविडेंस है कि वो बेहतर रिजल्ट होते हैं बनिस्बत कुछ नहीं करें? सॉरी एविडेंस में नहीं पता, मगर आई थिंक वी यूजुअली इन आवर सेटअप वी डू सर्वाइकल डिस्केक्टमी एंड फ्यूजन. तो क्या यूज करते हो? केज किस टाइप का यूज करोगे? हम सर पीके यूज करते हैं और जीरो प्रोफाइल यूज करते हैं. जीरो प्रोफाइल क्या बेहतर है पीके से? So it has its own adaptation for a screw to sort of, और एंटीरियर प्लेट लगानी नहीं पड़ती उसके लिए. हमें पोस्ट ऑपरेटिव जो है वो
वो itself अपने आप को immobilize रख के उधर फिक्स रखता है, रेट्रोग्रेड उसकी रेट्रोग्रेड पुल पीछे स्पाइनल कॉर्ड में अंदर नहीं जाता और पीछे पुल आउट नहीं होता। आप सही कह रहे हो, लेकिन बायोमेकेनिकली इट्स शोन टू हैव inferior results compared to a Yes, plate yes, unless you put yes, in 4 screws. yes, तो yes. इसलिए 4 screw रूटीन में is हम लोग तो एटलीस्ट यूज नहीं करते। better या than तो उसमें अगर 4 स्क्रूज वाले हैं तो यूज कर लो। ठीक है। अच्छा, अब ये आपने सर्जरी yes, भी कर ली, अगर पेशेंट को अब आउटकम कैसा होगा इस पेशेंट का? his pain and radiculopathy will be improved. His वो numbness पेशेंट will पोस्ट go ऑप कह रहा है also. मेरा दर्द तो वैसे ही है सर, आप कह रहे हैं कि आपने ठीक कर दिया मुझे, मेरा तो दर्द वैसे ही है। कितने लोग होंगे जो ये बोलेंगे कि हमें यार दर्द वैसे के वैसे है? Sir, I'm sorry. चलो, रीड एडवांसेस के बारे में क्या जानते हो सर्वाइकल डिस्क में? Sir, recent advance. ये तो ब्राउनी पॉइंट्स होते हैं यार आखिर में। Yes, sir. इंट्राडिस्कल प्रोसीजर्स का सर पूछ रहे हैं, मुझे तो वो पता। देखो, अगर बगैर इंस्ट्रूमेंटेशन के करना चाहूँ तो क्या प्रोसीजर कर सकता हूँ मैं बगैर इंस्ट्रूमेंटेशन के? सर इंटरडिस्कल प्रोसीजर होते हैं, न्यूक्लियोलाइसिस कर सकते हैं, नहीं, मैं उसकी बात नहीं कर रहा। एनीवे, तो व्हाट वी कुड डू इज वी कुड डू एन एंटीरियर फोरामिनोटॉमी और पोस्टीरियर फोरामिनोटॉमी एंड टेक इट आउट, or we could do an oblique corpectomy and remove it without causing a deformity or any problems, and you don't require instrumentation there. चलो सही, वेरी गुड। अब ये पेशेंट को ऑपरेट कर दिया, क्या रिस्क है दोबारा कि ये फिर से प्रॉब्लम हो सकता है इसको? Yes, sir, हो सकता है फिर से। there is chance of reoccurrence which is very low, 1% in 1% per 5 year. Oh, good, excellent, good Sir, job. I think sorry, last minute है, आप अपने comments और feedback अगर दे दो। Sure. I think, overall you're all right, but your questioning has to be uniform. It has to be in a fashion manner. You can't just go on एक चीज उधर पूछ रहे हैं, एक चीज उधर। और ये आप लोग तो माशाल्लाह एग्जाम दे रहे हैं, तो practice make sure करो you have all the questions in right order. And कोई भी अगर कहीं पेन है, तो अब आपने कोई भी 2 चीजें लेनी, पेन और वीकनेस। अब आप पेन और वीकनेस को डिफरेंशियल उसकी चीजें इलेबरेट करते जाएं, और आपको सवाल सारे पता है जो आपने पूछने हैं। तो आई थिंक वो अगर हम स्ट्रेस लेंगे तो हम तरीके से एग्जाम नहीं दे देंगे। बिल्कुल सिंपल सी चीजें, और ये तो सिंपल चीजें रूटीन में एग्जाम में रखी जाती हैं। तो कि एक सर्वाइकल डिस्क जरूर रखी होगी, एक लंबर डिस्क जरूर रखी होगी, एक OPLL जरूर रखा होगा। So I think this point of view, so I think it is very simple. So you just need to organize yourself for simple procedures. Okay, sir. Okay. Thank you. एजाज खान को पूछना चाह रहे हैं, वो बेशक पूछ लें, कोई क्या सवाल पूछ रहे हैं? फारूक, एजाज को अनम्यूट कर दें प्लीज। Until he unmutes Dr. Jaz, I would like to thank Professor Salman. Hi, sir. Can you hear me? Ji. Yes, my question has already been answered. My point was, why are we doing ACDF in this case? Why not posterior foraminectomy? So that has already been answered in the discussion. Okay. Thank you. Thank you. Thank you, sir. I would like to thank Dr. Salman. He was here with us yesterday. He's here with us today, and he's always been kind enough to show his presence, and which shows his dedication towards academics and towards neurosurgery. Thank you, Dr. Salman, for your time. Can we move on to our next presentation? We have Dr. Riaz Raja. No matter how much I say this, it's not enough. All these examiners have taken out time, and Dr. Riaz has been patient enough. He's passed overdue his time, and so we have Dr. Riaz Raja. Who will do the next case, Farooq? Okay, for the next case, we have Dr. Irfan. So, Dr. Irfan, get yourself ready for the case. Dr. Riaz, आपको सर स्क्रीन आ रही है नजर से? जी, मुझे आ रही है।
Okay, sir, over to you. This is the case. And Dr. Irfan is with you, sir. Hi, Dr. Irfan. How are you? Assalamualaikum, sir. I'm fine, sir. Welcome. Is this your first time? Yes, sir. It's my first time. Okay. Okay, start the case. Okay. Read the statement. Should I start history, sir? Okay. So the scenario is that your patient is suffering from the headache and since 6 months, and there is a right-sided hearing loss from the 2 months. Okay, sir. Should I start, sir, now? Yes. Yes, you should start, and Dr. Riaz will give you the brief answers. जो भी आपके हिस्ट्री के क्वेश्चंस हैं उनके लिए. अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर इरफान है. मैं आपसे आपकी बीमारी के बारे में कुछ सवालात पूछूंगा. इसके बाद तफसील से मुआयना करूंगा. डॉक्टर इरफान नॉर्मल जो प्रोसीजर है हिस्ट्री लेने का वो फॉलो नहीं कर रहे. यू कैन सी दैट वी आर ओनली टेकिंग द फोकस हिस्ट्री. सही है. सो आप सिंपली डायरेक्टली क्वेश्चन पे जाके फोकस हिस्ट्री लेंगे आप जो इससे रेलेवेंट हों. ठीक है. थैंक यू. ओके सर. आपने कहा मुझे कि आपके सर में दर्द है 6 महीनों से, और साथ में 2 महीनों से आपके राइट साइड की सीधी कान की सुनाई भी कमज़ोर है. तो आप मुझे बता सकते हैं कि आपके सर की दर्द अचानक शुरू हुई या आहिस्ता आहिस्ता शुरू हुई? जी, आस्ता आस्ता ही शुरू हुई. आप तो देख रहे हैं कि 6 मंथ का पीरियड तो आस्ता आस्ता ही होगा. और ये वक्त के साथ बढ़ रहा है? जी. अच्छा. और ये आप मुझसे पूछे नहीं, आप मुझे बताएं कि इस सिनेरियो को देख के आप क्या क्या सवाल स्पेसिफिकली इस पेशेंट से पूछेंगे. ठीक है. कंटेस्ट विद दिस स्टेटमेंट. Sir, I will elaborate the headache. I will ask about the onset, the progression, is it continuous or it is intermittent, and I will ask about the radiation of the headache. That is it radiating to the face or to the back of the neck? I'll ask about any redness of the eye. And beside this, I'll ask about any associated time, the headache in which the headache is increased, mostly morning time, any associated vomiting, any associated blurring of vision. After that, I will enter any aggravating factor like coughing or sneezing or straining, and any relieving factor like is it relieving with vomiting or not. After that, I will elaborate the hearing loss, that it is started on the right side. Is the left side is okay or not? The right side is either missing or not? Is it associated with any tinnitus or not associated with any tinnitus? Initially, does the patient having any ear discharge, any previous ear surgery, or any? I also ask about any vertigo, associated vertigo with hearing loss. After that, I'll come to the facial nerve center. I'll ask about any facial weakness. I'll ask about any facial numbness, and then I will ask about any swallowing difficulties, any coughing with drinking of water, and then after that I will ask about any walking difficulty and falling tendency to the right side or left side, any tremors in the hands, and after that I will ask about any stiffness in the lower legs when he is walking, and I will ask about any eye momentum. Nystagmus also in the history. And that is 45-year-old. I will also ask about any backache, any urinary incontinence, and any meds history and trauma history. Sir. Will you ask about the visual disturbance? Yes, sir. I will ask about any associated blurring of vision or decreased vision. No, this is must, because the patient is suffering from headache since 6 months. Yes, sir. Okay. And you are going through the backache and all the tremors, but you are not concentrating on the point. If the patient is having a headache with the right-sided hearing loss, the patient may have a visual disturbances, vertigo, vomiting. So these are the main 3 or 4 complaints which a patient can have associated with this type of the scenario.
Yes, sir. Yes. I will ask the headache. I will ask the vision loss with a headache. Is it increased with headache, or is it not increased with headache, or it is just blurring of vision? Or there is any decreased vision? Okay. Okay. Carry on. Is it is blurring, or it is complete it is decrease in vision? If it is decrease in vision, in which eye it is starting first, right eye or left eye or bilateral? Is it central or it is peripheral? After that, if it is just blurring, then I will ask about any association with headache. Is it increase with headache, or it is the blurring is decreased after vomiting? And after that, sir, I will ask about any cancer history, meds history, any radiation history, and I will ask about, sir, any bowel history or backache history, sir. Specifically, when you are talking about the cancer history, what kind of the questions you will ask from the patient? Sir, I will ask about any lymph node swelling, in leg, axilla, or groin. I'll ask about any chest coughing history. As there is any coughing, as there is any blood coming in the sputum. I'll also ask about any bowel history, that there is any bleed or rectum. Is there any history of any cancer in the bowel or in the lungs or prostate? I'll ask also elaborate about the prostate, that is there any urinary retention or not, sir. The Which type of the cancer is common in this age group, in particularly female? Sorry, sir, it's female. So I will ask about. I was thinking it was male. So sorry, sir, it's female. So I will ask about the breast history, sir. Is there any lump in the breast or not? Okay. Okay, let's move. And after that, I will just inquire the lobar history. Now, when you asked about all the history, you came to know that the patient is having the occipital headache, which is moderate in intensity, and there is an incomplete hearing loss. Okay, that is not the complete hearing loss. Yes. Sir, the patient is having occipital headache. It is mild to moderate and more in morning, and there is incomplete right side hearing loss. So I would proceed for examination. After GP, I would examine the cerebellum. First, I would start examination the cranial nerve. Examination from the lower cranial nerve. Of the patient, I will do the R test. I will see the any fasciculation in the tongue, any weakness in the tongue, any shoulder weakness. And that I will do the Rainey's test, Weber, and the whisper test in the both ears. And after that, sir, I'll come to the facial weakness. I will do the coronary reflex, as there's absent or present, specifically on the right side. And after that, sir, I will check the face sensation, and then I will do complete examination of the cranial nerve. I will check the fields. I will do the fundoscopy. I will do the visual acuity, light reflex, direct and indirect reflex, and I will check the first cranial nerve. Check the smell. After that, sir, I will come. After that, sir, I will do the higher mental function test and the lobar signs. And after that, I will check I will come to the lower limbs, starting from the upper limb. I'll check the tone, power, and reflexes, and I'll check the sensation. I'll also check the position sense in the upper limbs, and then I'll come to the lower limbs. In the lower limb, I'll check the power, reflexes, tone, planters, and after that, I will do the cerebellar examination. I will do the finger nose test, dyskinesia, test, and after that, I will do the Romberg test on the patient. And after the Romberg, I will do walk on the patient. And I will also check the spine of the patients.
अगर डॉक्टर रियाज जो है वो डिस्कनेक्ट हुए हैं शायद, लेट मी चेक अगेन। यस, वो डिस्कनेक्ट हो गए। डॉक्टर लाल रहमान सर, अगर आप कंटिन्यू कर सकें यहाँ से जब तक डॉक्टर रियाज अगर आ जाए। ओके, सो ये बताएं कि ऑन द बेस ऑफ हिस्ट्री एंड एग्जामिनेशन भी आपने की, सो वेयर डू यू लोकलाइज द लीजन? Sir, based on the history and examination, my lesion would be most likely intracranial, sir, infratentorial most. Infratentorial. Where in the infratentorial region? Most likely, sir, in the CP angle. So why you say it? सर डॉक्टर रियाज आगे वापस उनको मैं म्यूट भी कर रहा हूँ साथ में। जी डॉक्टर रियाज सर, सॉरी आप डिस्कनेक्ट हुए थे, हमने स्टार्ट किया। हाँ बिल्कुल अच्छा किया आपने, क्योंकि सडनली जो है ना लाइट की वजह से मसला हुआ। ओके, तो कहाँ पर हैं हम लोग? जी सर, एग्जामिनेशन कंप्लीट कर लिया सर। ओके, एग्जामिनेशन आपने कंप्लीट कर लिया। फाइंडिंग्स, सो सर आप यहाँ से आगे लीजिए। ओके, patient was intact, there was a sensitive hearing loss, long-term signs positive. Okay, fundoscopy, mild papilledema. So on the basis of your examination, how you will investigate this case? Sir, I will do, sir, the MRI brain of the patient with and without contrast. Okay, so what is in your mind, depending on all these investigations, depending on all these examination findings, what do you think? Where is the lesion? Sir, I think the lesion is infratentorial, sir. Infratentorial. Or in intratentorial at which side? Sir, it is most likely on the right side, sir. Where? Right CP angle, sir. CP angle. What kind of the lesion you are suspecting in this case? Sir, I am suspecting any schwannoma, meningioma, or it could be. I am suspecting these two, sir. Or it could be MOCKS. If the patient is not giving me the history of any breast cancer, then it could be MOCKS. Okay. Okay. Any other investigations you wanted to carry out for this patient? We'll also do the audiometric tests in this patient. But the audiometric test also give you the clue that this is a sensitive neural hearing loss. Yes, sir. And I will also do the perimetry investigations. Perimetry. Okay. So can I have a next slide? So read the MRI. Sir, this is axial T1 and T2 weighted image, T2 weighted MRI brain of the patient. T1 and T2 weighted MRI brain of the patient. There is globular shaped extra-axial lesion in the right CP angle. The lesion is hypointense and T1-weighted. It is hyperintense and T2-weighted. The lesion extended laterally into the external diatrium meatus. Medially, the lesion is compressing the brainstem. Posteriorly, it is compressing the cerebellum. And also medially, the lesion is compressing the fourth ventricle. And there is no dural present, and the lesion is not broad-based. Okay. Is there any other investigation? Complete MRI? Sir, I would like to see the contrast. Okay, but on the basis of the visual disturbances and bilateral papilledema, this lesion cannot do the papilledema until unless the patient is having the raised ICP signs. So the next CT scan which you are watching, okay, that shows a early moderate papilledema, moderate type of the hydrocephalus. Yes, sir. Sir, I will also look. So how will you manage this case? Sir, I will. The patient has developed. The patient is having headache. The patient is having vomiting, and the patient is also having bilateral papilledema. So I will also first relieve the hydrocephalus. I will do the VP shunting.
and after the VP shunt, I will operate the patient for the tumor surgery after 2 weeks. What are the other options if you are not dealing with the hydrocephalus? Sir, the other option is I can go straight away for the tumor after the fitness for general anesthesia and optimization fitness for general anesthesia. During the surgery, I will do the Frazier ball hole, and during the surgery, I will do the Frazier ball hole. I will remove the tumor. I will after the surgery, I will monitor the patient. If the patient get to react, I can do the ventriculostomy to the Frazier ball hole to leave the hydrocephalus. Or another option could be, sir, I can put the EVD and do the surgery along with EVD. After the tumor removal, if the patient is not raising symptoms, then we can remove the EVD and we'll follow the patient, sir. I will ask you a personal question. What do you like, either a first shunt or a EVD? Sir, I would like to do shunt, then, sir, the tumor surgery, sir. Why? Sir, because it is the big tumor, sir, and I will not able to remove all the tumor. Some tumor will remain to the brain stem, and then I would have to send the patient for radiations, and the patient will eventually develop hydrocephalus, sir. And the EVD, at the end of the day, sir, the patient will need some shunt, sir. So I would go for shunt first, and then the tumor surgery, sir. So you have given the statement that you cannot remove the whole of the tumor. That's why you are just preferring the shunt. Yes, okay? Sir. Yes, sir. So how you will counsel the patient? Sir, first, sir, I will greet the patient. After that, sir, I will ask about what the patient knows about his disease or her disease. And after that, I will explain the nature of the disease, that you have the tumor in the brain, which is usually benign. It is slow growing. It is there from months, from years in your brain, and it is now compressing the brain stem. So there are options. The first option is surgery. We have to remove the tumor, and the second option is the third option. Only treatment is surgery, and during the surgery, we may not be able to remove the whole tumor. So after surgery, we could send you for radiations, and I will explain the complication of the radiations, and I will also tell them that after the surgery, the hearing loss you have, that may not recover, but there are chances that it may get worse. But the benefit of the surgery with the compression of the brain stem, the compression of the neural structure, and the pain you are having, it will be relieved, and it will not progress further. Okay, Dr. Irfan, this is your assumption. This is your thinking that you cannot remove the whole of the tumor, okay? But as you were just consult the attendant, the patient, this tumor is a benign, so it is better you have to remove the whole of the tumor, irrespective of the tumor is attaching to the brain stem. Most of the time, these type of the tumors are very big in size. They are compressing the brain stem. They are also compressing the cerebellum. But it doesn't mean that you are thinking before the surgery that you cannot remove the whole tumor, and you start talking with the attendants, counsel them that you are not removing the whole of the tumor. And what would be happen if you will not remove the whole of the tumor? What will happen? Sir, I will wait for biopsy, sir. If it is, sir, it is usually benign tumor, so I will follow the patient with serial imaging. If it is not growing, fast, or the growth rate is slow, then I will do serial imaging. If it is growing, then I would send the patient for radiations. Again, the same thing. If that will grow, then what is the need of sending the patient again to the radiation therapy at the more extreme of the age? Today, the age of the patient is 45, and after the 5 to 10 years, the patient's age would be the 55 and 60.
जी sir. Sir, You are not deciding as a neurosurgeon. You are deciding just as a bookish of your knowledge that you don't want it to remove whole of the tumor. Sir, I would try to remove the tumor, but there is possibility that it may be adherent to the brainstem, and I may not remove the tumor. So that's I would have to explain that to the patient attendants that I would try to remove all. But if it is adherent and I'm thinking that I'm entering the brainstem or the vital structure, then I would have to leave that part of the tumor. Sir. But this statement can let the attendants for the patient to think about any other neurosurgeon to get rid of this tumor. If this is a benign tumor, and if you are before the surgery, if you are telling the attendant for the patient that you don't want it to remove this completely, then definitely they will go to the other neurosurgeon. Yes, sir, exactly. So my question was that you prefer the VP shunt first before the surgery. In context of that, because the VP shunt is very safe procedure, and sometimes the EVD cannot be put in place for a long period of time because of the infection and maybe because of the blockage. So ultimately, when your patient would be in a state of the post-operative weakness, and this patient is also having the long track sign, the patient would be in a post-surgical, not fit for the surgery, then taking the decision of putting the shunt post-operative would be difficult. So it is better to put the shunt initially, okay? Yes, sir. Yes, sir. But this should not be constant. You cannot remove the tumor completely. Yes, you can say there are chances of the facial paresis that can be solved by some other methods. Okay, you will try to save the facial nerve. But here you cannot say that this is a benign tumor. It's still the benign tumor, but you are going to operate in that tumor. Only 2/3 of the tumor you wanted to remove, and 1/3 of the tumor you wanted to leave as it is. Yes, sir. So what are the complications of this surgery? Sir, the complication of the surgery, sir, one is anesthesia complication. The second is immediate per-op complication, then immediate post-op complication, and then the late post-op complication, sir. The anesthesia complication, one complication is during the positioning complication. The patient might get hit any cervical or any nerve injury in the upper limbs or lower limbs, and the per-op complication is the patient may have any vessel injury like percranectomy. When we are going in, we may injure the sagittal sinus. Which sinus? Sigmoid or transverse sinus, or we may injure the cortex of the cerebellum, and down. If there would be the trauma to the transverse sinus, how you will deal it? Sir, if there is trauma to the transverse sinus, sir, I will pack the sinus, I will wash the sinus, and I will wait until the bleed stops. How you will pack it? Sir, first I will put the spongistan over the sinus, and after putting the spongistan, I will put the cotton patties, and after putting the cotton patty, I will put the pressure over it, and I will do wash over it. Okay, and by the tag up stitches to the dura, you can also control the bleeding. Okay. Yes, sir. Okay. What are the other complications operatively? Sir, operatively, the other complication is the cerebellar cortical injury, sir. And downward we could injure, sir. It is usually in the 7th and 8th nerve area, so we can injure the vascular injury, sir. And besides this, we can also injure the facial nerve. There could be a facial nerve injury, sir. And sir, we are down to the last minute. What is the normal position of the facial nerve in case of the CP angle schwannoma? Sir, normal position, sir. It's a big tumor, sir, so it would push the facial nerve upward and anteriorly, sir.
So what are the gadgets to prevent the facial nerve injury? Neuromonitoring, sir. I would do, sir, neuromonitoring in such patients, sir. Okay. And And what are the other gadgets to use in this CP angle tumor surgery? Sir, another microscope, sir, QSA, and facial nerve monitoring, sir, in this case, and brainstem or radiowave potential, sir, monitoring, sir, and another one is, sir, QSA, sir. That's all. Okay. Surgical microscope, QSA, and also intraoperative neuromonitoring. These all are necessary. After closing the wound, okay, in the ICU, what you expect the patient, if your patient becomes drowsy after the surgery, patient is fully conscious, but after the 8 hours he has drowsiness and he become worse. How you will manage that case? Sir, first I will approach the patient. I will do ABC. I will do a short history from the patient attendants that how he is getting drowsy, does he is having any fits, any jerking moment. After that, sir, I would check the GCS of the patient. I would see the pupil of the patient, and after that, sir, I'm suspecting 2 things: either the patient is having hydrocephalus, if it is not shunted previously, or if the shape is shunted previously, then I would suspect any hematoma in the tumor bed, sir. डॉक्टर साहब हाइड्रो जो है ना 6 घंटे में तो नहीं होगा ना, 6 से 8 घंटे में। सबसे पहले तो अगर 6 से 8 घंटे में कोई प्रॉब्लम हो रहा है तो वो तो इंट्रा ऑपरेटिव एंड ट्यूमर साइड ब्लीड हो सकता है, एंड दैट इज द लार्ज अमाउंट ऑफ द ब्लड दैट कैन डिटोरिएट द पेशेंट, नॉट द हाइड्रो बट द ब्लीडिंग। ओके, है या टाइम ओवर हो गया फारूक? यस सर, टाइम ओवर हो गया सर। Okay. Sir, any comment from the other? Give any comment? Dr. Riaz, if you want to give any comment or any suggestion to the candidates, because this is because we have the कैंडिडेट बहुत अच्छा है, इरफान बहुत अच्छे तरीके से उसने प्रेजेंट किया है, लेकिन कुछ चीजें ऐसी थी कि जो थोड़ी सी पर्टिकुलरली व्हेन ही वाज काउंसलिंग, ठीक है, मुझे लगता है शायद इसके दिमाग में कहीं ये चीज बैठी हुई है कि ये ट्यूमर बड़ा है और ये आधा निकालना है, ठीक है। डोंट इंटरप्रेट और आंसर सच टाइप ऑफ द क्वेश्चन, ठीक है ना। इफ यू आर वर्किंग इन योर सिनेरियो, ठीक है ना, मे बी यू आर थिंकिंग लाइक दैट, but this is not the routine in everywhere in the world. Okay, this is a benign tumor. Lot of the things are used in neuromonitoring, microscope use. Just these are the things which need to remove the tumor completely. Okay, there is no any question of removing this benign tumor until and unless perioperatively you are thinking your patient is going by this last maneuver of touching the that part of the tumor which is totally adherent to the brainstem, and now your anesthetist is also telling you that the patient is going into the bradycardia, so leave that. Otherwise you are not, you cannot comment that I will counsel the patient that I will remove the tumor 2/3 but I will leave the tumor 1/3. This is a very bad question answer. Okay, ठीक है। आप ये भी कह सकते थे कि हाँ, पेशेंट जो है आईसीयू में जा सकता है, पेशेंट जो है आपका उसको थोड़ी सी फेशियल पैरालिसिस हो सकती है, जिसको अगर आपके पास इंट्राऑपरेटिव मॉनिटरिंग है तो ये नहीं हो सकती। थर्ड वन इज दैट कि ट्यूमर निकालेंगे, लेकिन ये चीजें आप बाद में कह सकते हैं कि मैंने ट्यूमर इसलिए नहीं निकाला कि इंट्राऑपरेटिवली मुझे एनेस्थीसिया की तरफ से या ड्यूरिंग सर्जरी मुझे ये हुआ था कि अगर मैं ये ट्यूमर का हिस्सा निकालूंगा तो पेशेंट की या तो डेथ हो सकती है या पेशेंट सीरियस कंडीशन में जा सकता है। अगर ये बात थी तो फिर आपने वो हिस्सा छोड़ दिया, लेकिन अगर आप काउंसिल ऐसे कर रहे हैं तो फिर आपसे कौन सर्जरी करवाएगा? पर्टिकुलरली इन द बेनाइन ट्यूमर यू कैन नॉट से, यू कैन नॉट आंसर लाइक दैट। ओके, Thank you, Professor Vyas Raja, for your time. आप बहुत पेशेंट थे सर, we went well over time, हम काफी लेट हो गए और आपको हमने जो टाइम दिया तो उससे बहुत आगे चले गए, बट आपका बहुत बहुत शुक्रिया एंड दैट शोज कि आपका जी एकेडमिक्स की तरफ और प्रेजेंस की तरफ
आपका इंटरेस्ट कितना है. Thank you, sir. Thank you, Scott. Thank you. Thank you. Thank you so much, sir, Okay. Dr. Allah. Nas. Can we have Dr. Amir Saki's case? I mean, Dr. Amir सुबह से short cases से हमारे साथ है, and he was kind enough to stay with us, and he's filling for another examiner जिनका कुछ हो गया है, and he took the interest himself और I think ये आप लोगों के लिए मतलब इस तरह के जो एग्जामिनर्स हैं या जो इतने इंटरेस्ट शो करते हैं, आई थिंक इनका जितना शुक्रिया किया जाए कम है. डॉक्टर आमिर का केस और कौन कर रहा है? हु इज डूइंग द नेक्स्ट केस? डॉक्टर मुसद्दिक करेंगे नेक्स्ट केस. लेट मी सी कि वो किस नाम से है. आई एम जस्ट मेकिंग अ क्विक कॉल. नाम लिख दे जिस नाम से, अगर उसी नाम से वो भी लिख दे. डॉक्टर मुसद्दिक. Anyone else who wants to do the case? अगर डॉक्टर मुसद्दिक नहीं है. Assalamualaikum. डॉक्टर आमिर को प्लीज अनम्यूट कर दें. Assalamualaikum. Thank you, sir. आपने तो सर इंट्रोडक्शन कराने का. Okay. Thank you, sir. We have a case here of 10-year-old male child present with headache 6 months, bilateral decreased vision 5 months, and polyuria for 2 weeks. I have to tell him the history or? Sir, I would like to take the history of this patient. I would start with the symptoms. डॉक्टर मुसद्दिक आप हिस्ट्री लेंगे नहीं. यू विल जस्ट टेल डॉक्टर आमिर के आप क्या क्या पूछना चाहेंगे, और उसके बाद नेक्स्ट स्लाइड पे यू विल गेट द फाइंडिंग्स के जो हिस्ट्री के अंदर है. ठीक है, आप सिर्फ बता दें उनको कि फोकस क्या क्या आप चाहते हैं उसके अंदर, हिस्ट्री के अंदर फर्दर डिटेल्स. I would like to ask about the history of seizures, if any. No history of seizures. Any history of unconsciousness? No. Any history of difficulty in speech, sir? No. So, any history of hearing loss? No hearing loss. And sir, I would like to ask about any history of bilateral or any limb weakness in this case? No limb weakness. The history of headache, bilateral decreased vision, polyuria. Headache for 6 months, bilateral decreased vision for 5 months, polyuria for 2 weeks. And so I would like to further elaborate the history of headache. If the headache is localized to what region of the brain? Okay, you can say whole head. Also, what region? Whether anterior or it is involved in the complete head, or? He's just saying a headache over whole head. It's just a 10-year-old child. Okay. Okay, sir. So does the headache occur in the morning time or any other part of the day? Yeah, mostly in the morning time. Sir, is it followed by the vomiting? Sometimes. So if it is followed by the vomiting, then does it relieve the headache of the patient? Sometimes. Sometimes. Okay, sir. So I would like to ask about if this headache, what is the character of this headache? Can he elaborate the character of the headache? What do you want to ask about headache? Sir, whether it is causing. When I wake up in the morning, I feel headache over my whole head. Okay, sometimes I vomit, sometimes not. Okay, when I vomit, it gets relieved. Okay. Okay, sir. Sir, further, I would like to ask about the severity of the headache, whether it is mild, moderate, or severe. Mild to moderate, it is getting worse day by day. Okay, sir. Does it increase by coughing or sneezing or while urinating or defecating? Yes, it increased by coughing and increased for last.
Sir, how does the headache is relieved? Sometimes by vomiting and sometimes by taking some paracetamol by a local GP. Okay, sir. So I'd like to ask about the vision, whether the vision is deteriorating bilaterally or unilaterally. He has some stent in, and he has been treated for that. Those Sorry, sir, I'm not getting it. He has some growth problem. Okay, he has already been treated for stunted growth. Okay, sir. Sir, I would like to ask about the vision. Whether the vision is bilaterally decreasing or it is unilaterally increasing. It is bilateral decreasing. Okay, sir. Sir, how it did start? Was it gradual or sudden start in the decrease of the vision? Gradually. Gradually. So, did it start from one side or on the same occasion bilaterally? No, bilaterally. Bilaterally. So, whether he can appreciate the colors? He can appreciate the colors, so. Yes, he can. Okay. Sir, did the vision start deteriorating from the sides or from the center, sir? Yes, you have to examine that. Okay, he can't tell you whether it is sight or not. Also, he's just saying the vision gets worse. That's just a 10-year-old child. You have to keep that in mind. Okay. Okay. Can't give you much. Okay, you have to examine by Okay, yourself. sir. Okay, sir. Sir, I would like to ask about the other symptoms as well. I would like to ask about whether the patient has the history of rage or not. Rage? Anger. Not, yeah, not very common. Okay, sir. Just the usual rage. He's crying with, in the morning, he's crying with due to pain, due to headache, okay, due to vomiting. So can you differentiate? Can you differentiate between the two sides of the body? Sorry, no, not the two sides of the body. The two sides are equal. Okay. The power sides. So I'm asking, can he differentiate between the two sides of the body? Yeah, he can. Okay. Are there any hallucinations in the vision? Sometimes. Sometimes they have hallucination. Are there any pituitary symptoms, whether there's any increase in hand size or any? I already mentioned he has stunted growth. Okay. Short stage. Okay, sir. And sir, there's also the history of polyuria as well. With that, I would like to ask about. I would like to ask about whether he has any thirst problem or any problem with hunger. Not that much. He has negative lobe signs. Okay, this will help you more. Okay, he has negative lobe sign, but his vision is getting worse day by day. Now I'm not able to get you. So okay, sorry. He has negative lobe signs. His lobes negative. Okay. And so I would like to ask about any study can be say other thing like this, sir. How you want to examine him? So I would like after general physical examination, I would like to go for the MMSC examination, and then I would like to go for the cranial nerve examination. And, what will be of examination? So in the cranial nerve examination, I would focus my examination over the cranial nerve 2. I will go for the visual acuity, visual fields, color vision, as well as I will go for the papillary edema if there's papillary edema. And also I will go for the movements. I will look for the eye movements as well. Whether he is... So, can you listen to me?
So. Okay. Go slowly, please, and listen to me. Okay. You have mentioned second cranial nerve. Okay. Right? Yes, sir. Okay. As I've already told you, his vision is getting worse and worse day by day. Now the only vision is finger counting. Okay, sir. Okay. And what else you like to see in second cranial nerve? So I would like to look for the papillary edema if there is. Oh. Okay. The papillary edema is positive. Okay. So apart from that, I would. Edema. Sorry, sir. Can you tell me the grades of papillary edema? So there are 5 grades according to the Freising grading. Grade 1, grade 0 is actually normal fundi, and grade 1 is the C-shaped hollow with temporal sparing, and grade 2 is circumferential hollow around the disc space, and grade 3 is actually there is obscuration of the vision obscuration of the vessels at the disc margin, and grade 4 is obscuration of the vision at the disc at the central disc, partial obscuration of the vision at the central disc, and grade 5 is actually the complete obscuration of the vision at the central disc. Okay, good. Now carry on with other cranial nerves. What do you like to see in other cranial nerves? Sir, I would like to check for the movements of the eye if there is any diplopia, and for that, and also I've been told that there's cerebral signs are negative, and there's just papillary edema and vision is short stature. So, hello, sir. Okay, we go with cranial nerves one by one. Okay, you examine the second, then you go for third. Yes, sir. I check for the third, fourth, and sixth cranial nerves in that, and I check for the diplopia as well. Okay, then fifth. So I would like to check for the sensations on the face, and also I would like to check for the mental reflex, and also I would like to check for the movements of the jaw, whether he can open the jaw and can move the jaws towards the sides. And 7. So I would like to go for the wrinkling on the forehead and closure of the eyes, as well as I will ask the patient to blow his mouth and if he can show his teeth. Okay, you have done your cranial nerves. Okay, good. You know the cranial nerves. Very good. Yes. Now the cerebral signs. How you check the cerebral signs? You mentioned about cerebral signs. I would see whether he has any head bobbing or head nodding, and then I would like to look for the nystagmus, and after that I would like to go for the finger nose test, and then I would ask the patient to say whether he can say Sirat al-Mustaqim or Qasantanya, and then. Okay, thank you. All cerebral signs are negative. Yes, sir. Okay. Okay. Now, how you investigate? And so in this case, can you have some provisional diagnosis with these things? Provisional diagnosis is craniopharyngioma. Okay. How you conclude about craniopharyngioma? Sir, because there's a short stature, the vision is decreasing. Also, there's papillary edema, and with that, there are symptoms of the res ICP in this patient. So, I would conclude as a case of craniopharyngioma. Okay. Okay. Investigations.
Farooq, can you show the So investigation? I would go for the MRI brain with and without contrast, and the rest of the investigations according to the findings on MRI. Okay. Apart from MRI, what would you like to do? So I would like to get the CT scan brain plane with, of this patient. Good. And apart from imaging, you're suspecting so I would like to get the baselines and electrolytes of this patient done, and also the visual parametry of this patient done. Visual parametry. Okay. We jump to cranial nerves again. Again, we are talking about. We have already done perimetry, right? Okay. And investigation, blood investigation. Like to do anything? So I would like to go for the blood investigations. I would like to go for the electrolytes of this patient. Mm-hmm. And, anything? You're suspecting craniopharyngioma. Okay. Do you have some important structures around craniopharyngioma? What are the usual pharyngioma? So sir, I didn't get your question. Sorry. What are the usual site of craniopharyngioma? So usual site of craniopharyngioma can be supradiaphragmatic or infradiaphragmatic, diaphragmocelli. So it is actually in the supracellular space. The usual site of the craniopharyngioma is in the supracellular space. Okay. Can you have any differential diagnosis in that particular area? Sir, differential diagnosis could be a Rutgers cleft cyst could be there because Rutgers cleft cyst, and also there could be a certain sort of any other apart from the neoplastic lesion, there could be certain infectious lesion as well, which could be a fungoma over there. Infection, neoplastic, so you have already mentioned craniopharyngioma. What other neoplastic lesions we can expect in this region? Sir, sorry. Is it an extracranial lesion you are suspecting or intracranial? Intraaxial or extraaxial, sorry? Sir, I'm suspecting over here the extraaxial lesion, not the intraaxial lesion. What other you can have here? Sir, apart from the craniopharyngioma, there are the various one which could happen over there. These are the meningiomas and the pituitary adenomas which could happen. If this was not a child, then I could have had those as well. Okay, are there anything else you can find over here? Any other lesion? Sir, there could be a congenital lesion because this is a young child, so there could be a congenital lesion which could be over here. So vascular could be an ECOM, giant ECOM aneurysm could be there. For example, if they got some pituitary thing, ठीक है, pituitary को कुछ करता है ये हमारा craniopharyngioma, compress कर सकता है या कुछ कर सकता है, so any pathology it can cause to surrounding structure. What surrounding structure have in this region around your? Dr. Ahmed, we have 8 more minutes to go, so we can move to investigation. Close this investigation, please. Sorry. Investigation तो हो गई, अब treatment पे चले जाए. And this person को scan दिखा दें so that he can. Scan देख लें. Next, please describe the scan. Okay. Yes, sir. So this is MRI brain with contrast showing cystic consolidation at the cellular and supracellular region, and these are the axial views. And this shows a cystic consolidation in the cellular and supracellular region. Okay.
और इसको और डिफाइन कर सकते हैं सिस्टिक रीजन को? Good. This one. Good. Sir, there's a more cystic lesion that is greater than the solid lesion, and it is also compressing. Pituitary adenoma है, ठीक है? Say sir. मैं कह रहा हूँ कि pituitary adenoma है. How can you prove this is a craniopharyngioma? Sir, one thing that the pituitary adenoma won't have a cystic component in it. This is very rare, and that would be heterogeneous, and pituitary adenoma would be heterogeneous, but this is a solid component of this part of the tumor has got the homogeneous contrast enhancement. And apart from that, और क्या होता है इसमें? All right. One more imaging you'd like to see. Why you want to see the CT scan? So I would like to see the calcifications, and with that, I would like to see the hydrocephalus as well. Okay, good. Or why you are not mentioning to test pituitary hormones in that investigation? Sir, Any these are specific much reason? important in this case. I'm sorry, I forgot to mention the pituitary hormones in this. बोल रहा हूँ बेटा, आप सिर्फ इलेक्ट्रोलाइट्स पे जोर दिए जा रहे हो. मुझे पता नहीं इलेक्ट्रोलाइट तक क्यों बार बार कराए जा रहे हो, लेकिन अब इलेक्ट्रोलाइट्स कराए जा रहे हो. अच्छा, सॉरी. How you manage this case? Sir, I will after counseling and consent and after admission and proper optimization of this patient, I would operate upon this case. ठीक है. क्या आप इस तरफ क्या बताएंगे अटेंड को, क्या करना चाह रहा हूँ मैं? What you like to do? How you like to operate? Sir, I would like to go for surgery in this case, and I. Sir, sir. What do you have any other option apart from surgery? So apart from surgery, I can go for the Ommaya reservoir placement in the shunt and this cyst, but this cyst is so small that I might not be able to place the Ommaya reservoir in this. Apart from that, Ommaya reservoir is also a part of surgery. Yes, ना? Surgery है ना? Surgery है ना Ommaya reservoir तो? मैं पूछ रहा हूँ कि anything else? It's surgery. Surgery के अलावा कुछ आप और कर सकते हैं सर? सर्जरी नहीं कराना चाहते वो, कुछ और कह रहे हैं, कुछ और कर सकते हैं क्या आप? हाँ या नहीं? Yes or no? Sir, we can go for. We have other options. We have chemotherapy that we can go for this. Chemotherapy कौन सी होगी इसकी? Also, after putting in the Ommaya reservoir with. जी बताओ बेटा जी, is it a benign or malignant lesion? So this is a benign lesion. Benign lesion, अच्छा. उसमें chances है malignancy develop होने के? So there are least chances. जो मैं Sir, actually we don't have any chances malignancy in craniopharyngioma. It's a benign lesion. ठीक है. तो chemotherapy तुम क्या करोगे इसकी? क्या? Sir, I didn't get you. How you do chemotherapy? How can you give an option of chemotherapy in this case? Sir, Ommaya reservoir and then interferon alpha, and these could be given through the. Sir. और क्या option है तुम्हारे पास? Sir, these are the options that could be considered for this patient. Therapy है और एक surgery है, right? यही तुमने कहा है ना? यही options है बेटा जी. And after that we can consider for the radiation as well, sir. कौन सी radiation? So stereotactic radiosurgery we can consider these cases as well. तो ठीक है. अब तुम मुझे to the point जवाब दो ना बेटा. Surgery में क्या करोगे इसमें? How you approach this lesion? Sir,
And what we do for surgery? So I would say, sir, how you approach this lesion? So I would go for the tyrionial craniotomy in this, and after tyrionial craniotomy and after taking the skin flap and then bone flap, and then I would reach out at the best, and I would take the CSF out, and I would go for the cyst drainage first, and then I would go for the biopsy of the solid component of the tumor. What type of fluid you can find in this cyst? What type of fluid you can find in this cyst? So, as the machinery oil type fluid could be found in the cyst. इसमें होता है वो, मेरा नहीं ख्याल इसमें होता है. So, sir? मशीनरी तो इधर नहीं होता मेरे ख्याल से. लाल रहमान मुझे करेक्ट कर लेंगे अगर मैं गलत कह रहा हूँ. हो सकता है, यानी जरूरी नहीं कार्बो वक्त, लेकिन मशीन हो सकता है. रथ के क्लिप वगैरह में ज्यादा मिल रहा होता है. चलें ठीक है, तो फिर क्या करेंगे? और कोई अप्रोच, कोई स्पेसिफिक अप्रोच? Sir, last 1 minute. Sir, I am not getting you, sir. So specific approach. Sir, I have, then I will follow up the patient after that. What's, अच्छा तो छोड़ दो अप्रोच को. ये बताओ बेटा आपका गोल क्या होगा? ठीक है, पार्शियल रिमूवल ऑफ दिस ट्यूमर, सिस्ट रिमूवल होगा, सॉलिड कंपोनेंट रिमूवल होगा, क्या गोल होगा हमारा? So goal is to aspirate the cyst and the biopsy of the solid component. We cannot remove the tumor completely because it is adherent to the structures at the base to hypothalamus. So if we take out or if we go for any further intervention with this tumor, then the patient won't be alive on the table. Patient can die on table. हाइपोथैलेमस से अगर चलो ये अडर है ये, ठीक है, तुमने इसको चलो निकालने की कोशिश की है, ठीक है, तो क्या होगा फिर? Sir, firstly, if there is any injury to the hypothalamus, then इंजरी से क्या होगा? क्या साइन सिम्टम्स होंगे? चलो हो सकते हैं हाइपोथैलेमस. Sir, patient can have fever, patient can have electrolyte imbalance, and the least the patient can die on the operative table. और इसके अलावा और कुछ? मेरा इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस बहुत पसंद है, अच्छी बात है. और इसके अलावा sir, चलो ठीक है. आप अपना फीडबैक दे दें तो आप बताना चाहेंगे. डॉक्टर साहब आपकी आवाज बहुत कम आ रही है. डॉक्टर साहब कह रहा हूँ कि फीडबैक जी फीडबैक दे दें. I think we're exceeding time. सर आप अपने लास्ट फीडबैक या कमेंट्स दे दें डॉक्टर मुसद्दिक को. ओके राइट. मुसद्दिक बेटा आपकी कहते हैं तो टू द पॉइंट एक तो थोड़ा रखा करो, ठीक है, और सुना करो कि एग्जामिनर व्हाट ही लाइक्स टू से और व्हाट ही लाइक्स टू आस्क फ्रॉम यू. ठीक है, आप अपना जो क्वेश्चन आंसर उसको कंटिन्यू कर देते हैं और फिर आगे तक जाते रहते हैं. ठीक है, जितना क्वेश्चन किया गया उतना ही सवाल देना है. और जैसे मैंने पिछले उसमें कहा था कि ना बेसिक चीज नहीं छोड़ सकते. ठीक है, अगर आप ये कहते हैं पिट्यूटरी के रीजन में कोई भी रीजन है उसमें पिट्यूटरी हार्मोन्स ना कराएं तो ये अब इसको एक्सेप्टेबल नहीं है ये. ठीक है, पिट्यूटरी हार्मोन्स आप नहीं करा रहे, पिट्यूटरी का लीजन है तो ये तो एक्सेप्टेबल है ही नहीं ना. ठीक है, किसी भी स्टेज पे. ठीक है, बस यही कहना मुझे. ठीक है, तो बेसिक चीज नहीं छोड़ सकते. और दूसरा ये कहते हैं एक और कि आप खुद एग्जामिनर को गाइड करेंगे तो किस तरफ जाए. ठीक है, स्टूडेंट गाइड कर रहा होता है एग्जामिनर को किस तरफ जाना है, तो एग्जामिनर उसी तरफ चल पड़ेगा अपने हिसाब से. बस ये टेक्निक जो आहिस्ता आहिस्ता डेवलप कर सकते हैं. ठीक है, अगर आप टू द पॉइंट रहेंगे और अपना सुनेंगे एग्जामिनर की कि वो क्या कहना चाह रहा है. ठीक है, तो आप खुद ही उसको गाइड भी करते रहेंगे. ठीक है, चलो ठीक है, थैंक यू. थैंक यू सर. डॉक्टर लाल सर आप कुछ कहना चाहें?
अच्छा, इसमें जो है जिस तरह एग्जामिनर ने, डॉक्टर अमर सगीर ने सारी चीजें पूछ ली और उसने बिल्कुल ऑल क्वेश्चन वर टू द पॉइंट, और उसकी जो कमेंट्स बिल्कुल वैलिड। यानी इस पेशेंट में डायरेक्टली वो है, यानी एक पेशेंट है स्मॉल फॉर एज है, विजुअल प्रॉब्लम है, पॉलीयूरिया है, तो और क्या चीज हो सकती है? ठीक है, तो डायरेक्ट इट इज सेलुलर लीजन है और क्रेनिफेरेंजियोमा है। तो आपकी क्वेश्चंस और आपकी एग्जामिनेशन दैट शुड बी टू द पॉइंट। यानी बार बार आपको प्रॉम्प्टिंग की जरूरत पड़ती है, जिसमें अगर आपने जो है ना क्या कहते हैं, इधर उधर की क्वेश्चन नहीं करनी चाहिए, बिल्कुल टू द पॉइंट जाना चाहिए, क्योंकि आपका बिल्कुल सीधा साधा केस है। और बार बार आपसे कहा जा रहा है कि भाई और क्या इन्वेस्टिगेशन करेंगे, आप इलेक्ट्रोलाइट्स कर रहे हैं, आप इधर उधर की चीजें कर रहे हैं, एमआरआई के बाद सीटी स्कैन कर रहे हैं, उसकी कोई जरूरत नहीं है, बाद में जब वायु में जरूरत पड़ सकती है, जब डायग्नोस की तरफ आ रहा था। लेकिन इलेक्ट्रोलाइट्स बार बार बोल रहे हैं और आप पिट्यूटरी हार्मोन नहीं बोल रहे, जो कि एक टर्निंग पॉइंट है, एंड द एग्जामिनर विल डिसाइड वेदर आई शुड फेल यू और शुड आई पास यू। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरा, जब वो अच्छा एक और बार बार ठीक है, तो इस चीज की तरफ जो इंपॉर्टेंट चीज वन शुड गो टुवर्ड्स इट। और अप्रोचेज हैं उसमें, जब आपसे सारे पूछी जाए तो आप ठीक है ट्रांसक्रेनियल लिक्स में ट्रांसफेराइडल का भी जिक्र करना चाहिए। और बाकी इस चीज में अक्सर क्वेश्चन ऐसे आते हैं कि भाई व्हाई क्रेनिफेरेंजियोमा सर्जरी इज डिफरेंट फ्रॉम अदर्स, व्हाई इट इज डिफिकल्ट। तो इसमें वो एडेशंस और आप पूरे रिमूव नहीं कर सकते। अच्छा, एक बात आप कह रहे हैं कि भाई हाइपोथैलेमिक में इंजरी हुई तो पेशेंट टेबल डेथ हो जाएगी। क्यों टेबल डेथ हो जाएगी? वो तो पेशेंट की प्रॉब्लम्स होंगी, बाद में उठेगा नहीं। टेबल डेथ तो तब होते है जब कोई ब्लड लॉस हो, तो ऐसे पेशेंट में टेबल डेथ तो नहीं होनी चाहिए। और दूसरा है कि क्वेश्चन समझने चाहिए एग्जामिनर की, बिल्कुल आपको सुनना चाहिए, शुड नॉट बी इन हरी। और एग्जाम में एक और चीज जो इंपॉर्टेंट है, बार बार मैं कह रहा हूँ कि भाई आप लोग जो है ना इसी दिन में अपने आप में सब्र पैदा कर ले और भागने की कोशिश न करें, बस फेस करे चीजें। तो बाकी ऑब्जर्वेशन उसकी बड़ी अच्छी थी डॉक्टर आमिर सगीर की, और लेट्स इंशाल्लाह दिस विल हेल्प अस। जी, So we are Thank you. moving towards the last case, sir. Thank you so much, Dr. Amir Sagir. You were there from the start, and you gave a lot of time on your free day, actually. So Farooq, I would like to invite Dr. Lal. Dr. Lal is the cornerstone of this review course, and जब भी हम रिव्यू कोर्स की डॉक्टर जुम्मा से बात करते हैं, डॉक्टर जुम्मा हमसे बात करते हैं, he is the first person that डॉक्टर जुम्मा usually call, and he has been here, कल भी थे, आज भी थे, and he's been patient enough to sit throughout. And so I think कि जो लास्ट केस है ना, दिस इज द डू एंड डाई वाला केस है। इसके बाद आपके पास जो जो सवाल है ना प्रोफेसर लाल रहमान के लिए, आपने उनसे पूछना है अपनी क्वेरीज जो भी है ना, बिकॉज नेक्स्ट वीक एग्जाम है, उसके बाद मतलब दिस इज द लास्ट मोमेंट। तो ओवर टू डॉक्टर लाल एंड फरूक, कैन यू पुट अप द केस एंड टेल अस कि कौन अब इसको करेगा? Yes, case is ready, and Dr. Jawad will do this case. Let me mute him. Dr. Jawad. जी डॉक्टर जवाद। जी अस्सलाम वालेकुम सर। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी फरूक दिखाए केस। जी सर। So this is the case. अच्छा, इसमें अगेन यानी बार बार एक ही बात हम कर रहे हैं कि आपने टू द पॉइंट क्वेश्चंस करने हैं और आपने टू द पॉइंट एग्जामिनेशन करनी है। डॉक्टर जवाद काइंडली अगर आप अपना कैमरा ऑन कर लें तो। ओके सर। ठीक है, और टाइम को देखा करें खुद। फरूक ये टाइम आपने लगाया हो, ठीक है, तो उसके मुताबिक चलें। अभी दिस इज लास्ट वन और काफी इंस्ट्रक्शंस मिली, तो आई थिंक यू डोंट नीड फर्दर इंस्ट्रक्शंस, और आपको पता है, ठीक है। तो ये 52 इयर्स ओल्ड फीमेल पेशेंट है हु प्रेजेंटेड विद हिस्ट्री ऑफ हेडेक फॉर 2 इयर्स, और इसको राइट लेग में वीकनेस है 3 मंथ से। ओके सर। हेडेक है, राइट लेग की वीकनेस है, फीमेल पेशेंट है। सो फर्स्ट आई विल इंट्रोड्यूस एंड टेक कंसेंट। आपने रेलेवेंट क्वेश्चंस करने हैं और रेलेवेंट एग्जामिनेशन भी पूछनी है आपने, ठीक है? ठीक है सर। अच्छा सर, आपको सर दर्द और वीकनेस के अलावा कोई और कमजोरी है सर? आपको झटके होते हैं? झटके उसको कभी कभार पड़ते हैं, ऑफ एंड ऑन, कोई 1-2 पड़े हैं उसका भी। अच्छा, कभी कभार पड़ते हैं, ठीक है। और वो कब पड़े हैं सर?
एक तो 2 साल पहले पढ़ा था और अभी रिसेंटली भी एक पढ़ा है। अच्छा, इसके अलावा बोलने में इसको कमजोरी है सर? नो, वो कमजोरी नहीं है, समझ पाता है जो बंदा बोलता है उसके सामने? यस यस, शी हैज नो प्रॉब्लम। अच्छा, इसके अलावा सर कानों में सही सुनाई देता है? यस। नजर तो कमजोर नहीं है? नहीं, नजर ठीक है उसकी। अच्छा सर, जो फेस पे सेंसेशन है वो ठीक है? फेस की सेंसेशन भी ठीक है। कोई फेस पे कमजोरी तो नहीं है? नो। निगलने में कोई तकलीफ तो नहीं है? नो। अच्छा, आफ्टर दैट आई विल एलाबोरेट माय हेडेक। सर ठीक है। ये दर्द कब शुरू हुआ? 2 साल पहले अचानक शुरू 2 हुआ था साल क्या आहिस्ता? 2 साल ये से स्लो अचानक? स्लो स्लो शुरू हो गया, ऐसा ऐसा। टाइम के साथ बढ़ रहा है कि नहीं? बस कभी कभार हो जाता है सर टाइम के साथ। ये बारीपन है या चुभन सी महसूस होती है? ये दर्द है, हेडेक है। अच्छा, दर्द है। और दर्द किस किस्म का दर्द है? क्या मतलब, किस तरह दर्द आप पूछना चाहते हैं? मतलब ये बारिशापन है या आप को चुभन सी महसूस होती है, या इस तरह होता है कि कोई छुरी मार रहा है, या जिस नहीं नहीं, ये दिल की बस धड़कन? बारिश सा, बोझ सा होता है। बारिशा होता है। ये जी, दर्द सर के किस हिस्से में है? ये पूरे सर में होता है। पूरे सर में होता है। हम्म। अच्छा, इसके अलावा आप मुझे बताइए, दर्द किस चीज के साथ ज्यादा होता है, किस चीज के साथ कम होता है? बस ये जब दर्द हो तो मेडिसिन वगैरह खा ले तो उससे कम हो जाता है। मेडिसिन से कम हो जाता है। किस चीज के साथ ज्यादा होता है? तो ये बस होता रहता है, अच्छा, हर वक्त इसके दर्द अलावा रहता है। दर्द के साथ नजर ब्लरिंग तो नहीं नहीं, नजर नजर ठीक है। कमजोर? अच्छा, नजर ठीक है। नजर ठीक है। अच्छा, इसके अलावा मुझे ये बताएं कि दर्द के साथ आपको उल्टी आती है कि नहीं? नहीं, नो अच्छा, वोमिटिंग। ये दर्द किस दिन के किस हिस्से में ज्यादा होता है? हर वक्त रहता है। हर वक्त रहता है। ये दर्द अगर आ जाए तो आपको नींद से उठाता है या आपकी डेली एक्टिविटी से नहीं, इस इफेक्ट तरह होती है कि नहीं? नहीं। अच्छा, आपने कहा कि मुझे झटके भी पड़ते हैं। 2 साल पहले हुआ तो? ये पाँव से शुरू हो जाते हैं और ऊपर की तरफ जाते हैं। किस पाव से राइट शुरू हो जाता है? पाँव से अच्छा, और ये आगे हाथ में आ आ जाते जाता हैं, है? और है मेरी? उधर तक नहीं आते। अच्छा, उधर तक नहीं। ये झटके से पहले आपको कुछ महसूस होता है कि नहीं, क्या आपके साथ इस तरह कुछ अजीब कुछ नहीं, अजीब सी फीलिंग आती है? ऐसा कुछ नहीं होता। कुछ नहीं आती। ये झटका में बेहोशी होती है कि नहीं? बेहोशी इसमें नहीं होती। अच्छा, इसके अलावा मुंह से झाग तो नहीं निकलता? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। और आपका यूरिन भी उस टाइम कंट्रोल में होता है? तो इस तरह कोई मसला नहीं है। अच्छा, ठीक है। ये दर्द के लिए, ये झटके के लिए आप कोई दवाई ले रहे हैं? बिल्कुल, वो गोलियां पेशेंट ले रहा है। कौन सी दवाई ले रहे हैं? छोटी सी गोलियां हैं, कितनी मिलीग्राम? 500 मिलीग्राम के हैं। और ये सुबह 2 शाम टाइम लेते हैं? बिल्कुल। और कब से ले रहे हैं? ये 2 साल हो गए। अच्छा, ये गोली लेने के बाद आपको कोई तकलीफ तो नहीं हुई? नहीं नहीं, ऐसा कोई मसला अभी तक नहीं हुआ है। अच्छा, इसके अलावा जब झटका झटका खत्म हो जाता है, उसके अलावा आपको कमजोरी महसूस होती है या कुछ इस तरह की स्मेल तो नहीं आती आपको? नहीं नहीं, स्मेल वगैरह नहीं आती। नजर के सामने भी कुछ नहीं आता? नहीं, बिल्कुल इस तरह नहीं होता। अच्छा, अब आपको 3 महीने से टांग में कमजोरी है। ये कमजोरी किस तरह की है? टांग के किस हिस्से में ज्यादा कमजोरी है? ये नीचे पाँव में है, लेग पंजे तक में है। है? पंजे में पंजे है? में और जी लेग तक आ, है। इस कमजोरी से आप चल सकते हैं कि नहीं? यस। चलने में मसला तो नहीं होता? किस तरह मसला पूछना चाहते मतलब हैं? जब आप चलते हैं, आपकी पाँव से चप्पल निकल जाए? कभी कभार, कभी कभार निकलता कभी कभार है। होता है इस तरह। पाँव में सख्ती तो नहीं होती जब आप चलते हैं? नहीं सर, नहीं होती। अच्छा, इसके अलावा जो आपको कमजोरी है ये पंजे में, तो इससे आपकी गोश्त कम हुई है कि नहीं? नहीं अच्छा। अच्छा, इसके अलावा आपके रवैये में कोई तब्दीली आई है? नहीं गुस्सा तो बहुत नहीं आता नहीं आजकल? नहीं, ऐसा तो कोई चीज नहीं है। आपका पेशाब कंट्रोल में है? ये तो आपने पहले ही पूछा था, बिल्कुल अच्छा। कंट्रोल में है। अच्छा, पाँव के अलावा और कोई कमजोरी तो नहीं है? नहीं नहीं, बाकी बिल्कुल ठीक है। अच्छा, आप जब कपड़े पहनते हैं यस आपको पता चलता यस, है ये दाएं हाथ का बिल्कुल कोई है? सर नहीं सर, लेकिन मैंने बता दिया आपको, जब ये मरीज पैदल चलती हैं तो कभी कभार उसके पाँव से चप्पल निकल जाती हैं। अच्छा।
अच्छा, मुझे ये बताए कि आपको आपने सुबह नाश्ते में क्या खाया था? नाश्ते में अंडा पराठा। अंडा पराठा। और आपकी शादी कब हुई थी? शादी तकरीबन कोई हो गए 30 साल हो गए। अच्छा, नजर के सामने तारे चमकारे तो नजर नहीं आते? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। अच्छा, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, इसके अलावा आपकी और कितना ख्वाहिशात टाइम हो गया उसका हिस्ट्री का? हिस्ट्री का काफी टाइम हो गया। ओके, अब हिस्ट्री पे आपको क्या इन्फॉर्मेशन मिली? सर, और बाकी हिस्ट्री ठीक है। हिस्ट्री पे हेडेक है और राइट लेग वीकनेस है और साथ में सीजर से सर। Okay, so what do you think? Where is the lesion? Sir, my lesion is most likely supratentorial, sir. Where in the supratentorial region? Supratentorial on the left side, sir. Frontal. Left side? कहाँ पे? सर, जो सेंट्रल लॉब्यूल है, पैरासेंट्रल लॉब्यूल है, उसके इर्द गिर्द है। सेंट्रल लॉब्यूल किधर होता है? सर, इंटीरियर जो सेंट्रल सर्कस के बिल्कुल इंटीरियर है सर, मिड लाइन में। सेंट्रल सर्कस की बिल्कुल इंटीरियर है, तो हाउ कैन यू से दिस? सर, बिकॉज जो होमनकुलस है जो लेग की कंट्रोल करता है वो बिल्कुल सेंटर में होता है, मिड लाइन में, नियर द हेमिस्फेरिक इंटर हेमिस्फेरिक फिशर। तो उसको क्या कहेंगे आप? जी सर, होमनकुलस। होमनकुलस नहीं नहीं, उस रीजन को क्या कहेंगे? पैरासेंट्रल लॉब्यूल सर। अच्छा, ओके। तो what might be the what is your differential diagnosis? Sir, as this is a female and has a prolonged history, so I would go for sir some neoplastic lesion, sir. What neoplastic lesion? Most likely, sir, meningioma. कोई और चीज हो सकती है meningioma के अलावा? meningioma के अलावा सर लो ग्रेड ग्लायोमा भी हो सकता है सर। और कोई चीज? ओके, डॉक्टर फारूक, एग्जामिनेशन की तरफ जाए। ओके, व्हाट यू विल एग्जामिन इन दिस पेशेंट? क्या किस तरह करेंगे? आफ्टर जीपी में फ्रंटल लोब आप स्पेसिफिक एग्जामिनेशन करें, क्या चीज देखेंगे इसमें? मैं फ्रंटल लोब की एग्जामिनेशन करूंगा सर, सारी लोबर एग्जामिनेशन करूंगा। ठीक है, फिर उसके उसके बाद क्रेनियल नर्व एग्जामिनेशन करूंगा सर। क्रेनियल नर्व में कौन से नर्व देखेंगे? स्पेशली सर 2 देखूंगा, फंडोस्कोपी में हाइड्रोसेफलस है या नहीं है सर। ठीक है, और क्या देखेंगे आप? और इसके अलावा सर मैं सेरेबेलर साइन देखूंगा। सेरेबेलर साइंस क्यों देखेंगे? टू रूल आउट अदर थिंग्स सर। टू रूल आउट अदर थिंग्स सर, मतलब टू कंप्लीट द सीक्वेंस ऑफ द एग्जामिनेशन सर। ठीक है, और फिर सर लिग वो करूंगा सर, लेग की पावर देखूंगा, रिफ्लेक्स सारी चीजें देखूंगा सर। आप मुझसे पूछा करें ना कि ये चीज है तो मैं बताऊंगा कि इसमें है या नहीं है। यू आस्क मी द थिंग्स। अच्छा सर, ग्लेबुलर टेप इसमें है सर? ग्लेबुलर टेप नहीं है इसमें। अच्छा, इसमें पाल्मो प्रोनेटेड ड्रिफ्ट है सर? प्रोनेटेड ड्रिफ्ट में नहीं है। अच्छा, इसके अलावा सर इसको फिंगर इग्नोसिया है, स्टेरोग्नोसिस है? नो, इस तरह कोई चीज नहीं है। लेफ्ट राइट ओरिएंटेशन इसकी ठीक है सर? यस, दैट इज फाइन। अच्छा, इसके अलावा सर इसको पेपिल एडिमा है? पेपिलोडिमा उसको नहीं है। स्मेल इसकी ठीक है? स्मेल इसकी ठीक है। अच्छा, विजुअल इक्विटी एंड विजुअल फील्ड भी ठीक है सर? विजुअल इक्विटी ठीक है, फील्ड भी ठीक है। अच्छा, इसके अलावा आई मूवमेंट्स 3, 4 और 6 मूवमेंट्स ठीक है सही है, ऑल ऑफ मूवमेंट्स आर फाइन। अच्छा, 5 और 7 भी ठीक है सर? 5 से भी ठीक है। ये कितना टाइम ले रहा है हिस्ट्री में? आपके 10 मिनट हो गए तकरीबन हिस्ट्री में, इसके एग्जामिनेशन में। जी, आप मुझसे 1 मिनट और पूछ सकते हैं एग्जामिनेशन के बारे में। जी। अच्छा सर, इसकी प्लांटर किस तरह है? प्लांटर्स कौन से प्लांटर्स? कौन से लेग की, किस साइड पे? राइट के प्लांटर्स आप गोएंगे। और लेफ्ट की सही है, नॉर्मल है। पावर कितनी है सर? पावर उसका ठीक है। अच्छा, माइल्ड सा, उसकी वीकनेस है, ज्यादा नहीं है बिल्कुल। और सेंसेशन इसकी ठीक है ओलर बॉडी पे? सेंसेशन उसकी ठीक है। अच्छा सर। So I can show the findings और फिर हम जी। तो
प्रोनेटेड डिफ पॉजिटिव है, चलो फंडास्कोपी पेपिलोडेमा है, और पावर उसका चलो वो है 4+ है, 4/5 है जी। जी सर। So most likely lesion is in the frontal lobe, sir. Frontal lobe में, where in the frontal lobe? Sir, the right frontal lobe. उसकी राइट साइड पे वीकनेस है। उसकी No, so लेग, इसकी लेग कौन सी आपने बताई फरो? इधर लेफ्ट लेग वीकनेस लगी है सर। हाँ वो शायद आई गेस बाय मिस्टेक वो थोड़ा चेंज हुआ इसके अंदर। जी जी, इसकी जो है ना ऐसा करेंगे, इसकी राइट लेग में वीकनेस है और ये फाइंडिंग सारे राइट की तरफ ले जाए। ठीक है सर जी। तो इसका लेफ्ट फ्रंटल लोब में सर लीजन है। वेयर इन द फ्रंटल लोब? नियर द मिड लाइन सर। तो उसको क्या कहेंगे? ओके okay, so now again what is your differential diagnosis? My differential diagnosis sir is most likely neoplastic sir. neoplastic क्या चीज हो सकती है सर? पैरासिटिक मेनिंजियोमा हो सकता है सर। पैरासिटिक मेनिंजियोमा, ठीक है, और जी सर, और पैराफॉक्स भी हो सकता है सर। पैराफॉक्स भी हो सकता है, और सर इस रीजन पे कन्वेक्सिटी मेनिंजियोमा सर। कन्वेक्सिटी और okay, so how you will proceed further? Sir, तो जुमा wants to add something, sir. Sir, आपकी आवाज कम आ रही है। Yeah, I'm sorry. Can you hear me? Sir, can you hear me? Yes, sir, we can. आवाज आ रही है? जी सर। Okay, ठीक है, I'll come back later. I'll come back. Okay, sir. जी डॉक्टर। Okay, so how will you proceed further? Sir, I will do MRI brain plane with contrast, sir. So what do you want to see on MRI? I want to see any mass lesion, sir. कोई और इन्वेस्टिगेशन करेंगे आप? इसके अलावा सर सीटी कर सकते हैं सर। तो why you want to go for CT? जब आपने MRI किया तो CT स्कैन क्यों करना चाहते हैं? To look for any other associated pathology like calcification, etc. Calcification. और उसके अलावा सर जी, और उसके अलावा MRV कर सकते हैं सर। नहीं, CT स्कैन की बात कर रहा हूँ। एक कैल्सिफिकेशन आपका बताएगा, और क्या चीज बता सकते हैं CT स्कैन? कैल्सिफिकेशन और साथ में सर अगर हाइपरस्टोसिस हो वो भी हो पता चल सकता है। और जरा दिखाएं फारूक MRI। इसकी एक और फिल्म भी थी जी डॉक्टर, ये बताएं। एक और फिल्म, इसके अलावा एक और फिल्म भी है, ये वाला जी। अच्छा सर, दिस इज XZLT1 with contrast which images which show a lesion which is globular in shape and the lesion is in the left frontal lobe. The lesion is homogeneously contrast enhancing, sir. Okay, so what is your diagnosis now? My diagnosis is most likely, sir, meningioma, sir. कुछ और आप देखना चाहेंगे, कोई और चीजें? I would like to see other sequences. इधर इस पे फारूक जरा और दिखाएं इसको। इसमें क्या नजर आ रहा है? इस पे ब्रॉड बेस लीजन है विद ड्यूरल टेल, सर। ठीक है, एक और भी दिखाई फारूक, आपके पास है। इसमें क्या है? इस पे भी ब्रॉड बेस लीजन है एंड दैट इज नियर the superior sagittal sinus, sir, and it is also compressing the ipsilateral horn of the frontal. Okay, so now what is your diagnosis? My diagnosis is most likely, sir, parasagittal meningioma, sir. Okay, so what other investigation you will advise to this patient? I will like to do MRV, sir. Why you want to go for MRV? I want to do MRV because to look for the sinus involvement. MRV पे और कुछ चीज देखेंगे, सिर्फ साइनस देखेंगे? साइनस इन्वॉल्वमेंट भी देखेंगे सर, और साथ में आपको कार्टिकल वेन्स का भी पता चल जाएगा कि ट्यूमर्स के इर्द गिर्द कार्टिकल वेन्स है कि नहीं। कार्टिकल वेन्स के अलावा कोई और चीज?
साइनस की इन्वॉल्वमेंट पता चल जाएगी सर, कितनी तो बता दिया इन्वॉल्वमेंट। आपने, ठीक है, ओके ओके। सो व्हाट यू विल डू विद दिस पेशेंट नाउ? Sir, I will consult this patient for surgery. So what you will do in counseling? Sir, I will counsel him about the nature of the disease and will tell him that it has involved the sagittal sinus. So there may be a post-op venous hemorrhage, venous infarction. Venous infarction क्यों होगी? आप क्यों venous infarction कराना चाहते हो? ये पॉसिबिलिटी है सर, मैं नहीं कराऊंगा लेकिन पॉसिबिलिटी है सर। ओके, अच्छा ये बताइए कि डू यू नो अबाउट एनी classification of the involvement of the superior sagittal sinus? Yes sir, send to it all classification. Sir. What is that one? Sir, the grade 1 is it is involving only the lateral side, lateral wall. The grade 2 is when it is extending into the lateral recess. The grade 3 is when it is involving the whole lateral sinus, lateral wall. Grade 4 is when it is occupying the bulk of the sagittal sinus but not invading the opposite wall. And grade 5 is when it is involving the opposite wall, sir. Okay, ये कौन से वाला है? Sir, I will look for MRV to say it. Okay. इसका फर्क MRV तो नहीं है ना? नहीं sir. Okay. Suppose MRV है and that is showing the sinus is patent. So how will you proceed further? Sir, then I will go for craniotomy, give him a pre-op steroids and anti-epileptic, and patient shift OT shift करेंगे and then we'll operate him, sir. So how you will do craniotomy? Sir, I will first look for the sagittal sinus, that how much the tumor is interior to the coronal suture and how much is. अच्छा, craniotomy करते हुए what are your concerns? What are the things that you should be more careful about them? Sir, I should be worried about the superior sagittal sinus and the cortical veins, sir. What do you mean by cortical veins? आपका मतलब क्या है? कौन से cortical veins से क्या मुराद है आपका? जो vein of Trollard है सर, वो होता है उसको सर। ये नजर आ रहा है कि it is posterior to the coronal suture, so नहीं तो यहाँ पे जो है ना ये वेंस कहाँ जाती हैं फिर? सर ये superior sagittal sinus में ड्रेन होती है। तो वहाँ पे क्या कहेंगे, उसको क्या नाम देंगे? जब when it is draining into superior sagittal sinus, उसको क्या नाम देंगे आप? ब्रिजिंग वेंस का नाम सुना होगा ना? यस सर, ब्रिजिंग वेंस, यस सर। ओके, और क्या चीजें हैं जिसके बारे में यू शुड बी मोर केयरफुल? सर साथ में सर मोटर कार्डिक्स है तो उसका भी सर आई शुड बी वरीड अबाउट दैट। गुड, ओके। सो आप कैसे प्रोसीड कैसे करेंगे और हाउ वुड यू गो फॉर सर्जरी, क्या करेंगे आप? सर आई विल डू craniotomy inverted U-shaped incision. I will give in the incision of the skin. I will cross the midline, sir. And in making burr-hole, there are two screws. You can make burr-hole to the opposite side of the sinus and also on the superior sagittal sinus, sir. And then we will elevate the dura toward the sinus, sir, and debulk and devascularize and debride the tumor, sir. ठीक है, फिर? और सर मैक्सिमल पॉसिबल सेफ रिसेक्शन करेंगे। मैक्सिमम करेंगे या पूरा करेंगे आप? पूरा मैक्सिमम सेफ रिसेक्शन सर। ओके, ग्रास टोटल रिसेक्शन। What complications can occur because of your surgery to this patient? सर इंजरी टू द साइनस सर, इसके साथ हमारे साथ वास्कुलर इन्फार्क्ट भी हो सकते हैं, वीनस इन्फार्क्ट, और इंजरी टू द सराउंडिंग मोटर कार्टिक्स हो सकती है सर। इसके अलावा कॉम्प्लिकेशन ऑफ द जो सर्जरी है जो आम क्रेनियोटमी की है, हेमाटोमा सर,
hemorrhage anywhere. Okay, so if there is involvement of the sinus, और आपका सारी facility सब कुछ आपके पास है, so what you will do? What are the different options when the tumor is involving the sinus? Sir, we have the option of safe resection, and the tumor which is involving the sinus, we can leave it, or we can, sir, also remove the tumor invading the sinus, and then we can repair the sinus, sir. These are the option. But we usually do, sir, maximum safe resection and leave the tumor which is adherent to the or involving the sinus, sir. Okay. ठीक है, गुड। तो 4 ऑफ टाइम खत्म हो गया मेरा ख्याल में, क्या है डॉक्टर फारूक? डॉक्टर फारूक? जी सर। सर लास्ट 2 मिनट्स हैं, ओके आप कमेंट्स दे ओके। दें सो सभी को या बाकी लोगों को सबको। यानी इसमें हिस्ट्री में शुरू में आप उसकी तरफ नहीं आ रहे थे, लेकिन बाकी आपका वाइवा दैट वाज गुड। और इसमें क्लियर कट केस है कि उसको एक साइड पे लेग की वीकनेस है, उसको हेडेक है और उसको फिट्स पड़ते हैं। तो आप वो पैरासाइटिल का लफ्ज मैं बार बार आपसे पूछना चाहता हूँ, उस तरफ नहीं आ रहे थे, ठीक है। सो एनीहाउ इट वाज गुड। और बाकी जो है ना, इसमें आपने देखा हो कभी कभार वहाँ पे ये कॉर्टेक्स की बिल्कुल पैरासाइटिल जिनमें ग्लाइमा होता है, दैट हैज आल्सो द सेम प्रेजेंटेशन। तो अब क्लिनिकल बेस पे यू कैन से दैट, लेकिन जब एमआर लगे तो यस। सीटी स्कैन आप अगर करना चाहते हैं तो सीटी स्कैन में आपको बोन देखना है, क्योंकि व्हेन वी आर गोइंग फॉर क्रेनियोटॉमी वी शुड नो अबाउट दैट बोन। उसमें इमेजेस आप कोरोनल बनवा ले उससे, ताकि आपको ऊपर बोन्स का पता चले। बाकी हमारे लिए इंपॉर्टेंट इसमें कॉर्टेक्स है, ये ब्रिजिंग वेन्स है और सुपीरियर सैजिटल साइनस है व्हेन वी आर गोइंग फॉर सर्जरी। तो चीज़ आपने बिल्कुल सही बता दी और पूछा भी आपने बिल्कुल सही, जो आप उसकी तरफ पहुंच रहे थे। लेकिन इसमें जो सीजर्स है उसमें यानी आपने सेंसरी और मोटर दोनों जैक्सोनियन टाइप के लिए पूछता है किस तरह है। तो अदरवाइज इट वाज गुड सर। ओवरऑल आप बाकी लोगों को भी सर कमेंट्स दे दें जो उन्होंने पहले प्रेजेंट किया, शॉर्ट केसेस हो गए या लॉन्ग केसेस हो गए, या इसके अलावा जनरल सर कुछ सवाल पूछना किसी ने तो अपना हैंड रेज कर ले। वैसे मैं एक चीज बताऊं, ओवरऑल पहले भी हमने कोर्सेज अटेंड किए हैं, इस तरह कंडक्ट किए हमने, लेकिन अभी तो मुझे लोगों की परफॉर्मेंस बेहतर लगी। या तो ये था कि भाई जब सामने करते थे तो उस वक्त लोग डरते थे, इस वक्त यही वजह हो सकती है। लेकिन इस शॉर्ट केसेस में भी और लॉन्ग केसेस में मुझे तो रियली मुझे काफी बेहतरी नजर आ गई। ऑल ऑफ देम दे वर गुड, उनके क्वेश्चंस भी सही थे, दे वर आस्किंग द प्रॉपर थिंग्स इन एग्जामिनेशन, उनका वाइवा भी ठीक था। तो मुझे लग रहा है कि जब ये सामने होते हैं नर्वस हो जाते हैं, इस वजह से उनकी परफॉर्मेंस ठीक नहीं होती। सो ओवरऑल आई एम हैप्पी कि इस बार लोग अच्छे हैं। सर मैंने सबको अनम्यूट कर दिया, तो आप लोग अनम्यूट कर सकते हैं खुद को, और कोई भी सवाल आपका हो तो 1 बाय 1 यू में एक किसी ने पूछा है कि वो एक शॉर्ट केस में आनंदकारी और एमएमसी था, तो व्हिच वन शुड बी एड्रेस्ड फर्स्ट? अच्छा, उसमें देखिए, उसमें ऐसा है ना कि उस बच्चे में हाइड्रो है कि नहीं है। अगर हाइड्रो है तो आप उसमें शंट जरूर डालें, क्योंकि व्हेन वी आर गोइंग टू डू सर्जरी फॉर एमएमसी, और एमएमसी अगर बड़ा है तो इसमें हर्निएशन फर्दर बढ़ सकती है। और आपने देखो को जब वो कैरी हो और आपने एमएमसी ऑपरेट किया है और आपने हाइड्रो को डील नहीं किया, तो इन बच्चों के एकदम वो क्राई चेंज हो जाती है, दे फर्दर डिटोरेट। अगर कैरी है, हाइड्रोकेफेलस भी है और एमएमसी भी है, तो गो फॉर शंट, अदरवाइज यू विल बी इन ट्रबल। फारूक, किसी और ने अनम्यूट करने के लिए कहा है, प्लीज अनम्यूट। नहीं, सबको मैंने अनम्यूट कर दिया है, बट अगर आपको कोई भी सवाल करना है तो काइंडली पहले आप जो है वो हैंड रेज करें, ताकि जो है वो आप एक एक करके हम उनके क्वेश्चन दे सकें। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर पिछले क्वेश्चंस का भी आपसे पूछ सकते हैं, जो पिछले केसेस गुजरे हैं जी जी पूछें जो सवाल आपके हैं क्वेश्चन करें। अगर हमें ना आता हो तो हम फिर किसी और दिन बता देंगे आपको। जी सर, ये जो क्रेनियोफ्रेंजियोमा का पिछला केस गुजरा है उसके अंदर लिखा हुआ था बायलेटरल पैपिलोएडिमा, तो वो तो ऑप्टिक एट्रोफी नहीं, उसके ज्यादा हम ये बात मैंने बिल्कुल डिस्कस की कि इसमें सिर्फ फिंगर काउंटिंग है, तो व्हाई नॉट देयर शुड बी ऑप्टिक एट्रोफी।
और उसमें फील्ड करने की जो उसने पेरीमेट्री वगैरह की, तो उसकी क्या जरूरत है जब वो फिंगर काउंटिंग भी नहीं है मेरे ख्याल में कहती उसमें। तो ऐसे केसेस में देयर शुड बी ऑप्टिक एट्रोफी, उसके लिए अपनी देखना है और उसके लिए बताना है अपनी। ठीक। यू आर और राइट, सर यू आर राइट। और सर वो जो हमारे शॉर्ट केसेस होते हैं, इसके अंदर हमें हर केस के साथ 2-2 क्वेश्चन अलाउड होते हैं स्पेसिफिकली। उसके अंदर कोई स्पेसिफिक गाइडलाइन होती है कि यानी ये हमें लाजमी पूछने चाहिए क्या, उसमें हम कैसे उसे टेलर करेंगे? क्योंकि वहां पे तो इतनी बड़ी अम्ब्रेला होती है शॉर्ट क्वेश्चंस की तो जो इंसान इसके अंदर मैं जवाब देना चाहूंगा सर। इसके बाद मेरे पास है प्रेजेंटेशन एक छोटी सी, जिसके अंदर सारे केसेस कवर किए गए हैं और उसके अंदर क्वेश्चन भी ऐड किए हुए हैं। सो अगर आप लोग रुके तो मैं आपको दिखा दूंगा उसके बाद। थैंक यू सर, थैंक यू। ठीक, गुड। और इसमें और जो कोई इसके क्वेश्चन है अलावा ना, अभी डॉक्टर फारूक प्रेजेंटेशन भी देगा क्वेश्चन, यानी वो जरूरी नहीं कि आप जरूर कर लें। अगर आपको जरूरत महसूस हो रही है, देन यू कैन गेट परमिशन फ्रॉम द एग्जामिनर एंड देन यू कैन आस्क 1 or 2 क्वेश्चंस, लेकिन दोस क्वेश्चन शुड बी रेलेवेंट अकॉर्डिंग टू दैट पर्टिकुलर पेशेंट हु इज इन फ्रंट ऑफ यू। ओके सर, जी थैंक यू। डॉक्टर जवाब। सर मैं ये पूछा चाहता हूँ कि ये एग्जामिनेशन सिर्फ 2 रिलेवेंट करेंगे कि नहीं, जितने मतलब है, मतलब सीपी एंगल का ट्यूमर है तो उसमें रिलेवेंट ये कर्नल रिफ्लेक्स भी आता है, फंडोस्कोपी भी आती है, सेरेबेलम भी आता है और साथ में ब्रेन स्टेम भी आता है सर, लॉन्ग ट्रिक साइन। तो ये सारे देखने हैं कि नहीं बस सिर्फ नहीं 2 नहीं नहीं, देखने हैं? इसमें देखिए, अब सेरेबेलम के देयर आर 20-25 साइंस, तो सारे तो आप नहीं कर सकते। जी सर। आपने जस्ट शो करना एग्जामिनर को कि यस सेरेबेलम इज आल्सो इन योर माइंड, तो आप 1 या 2 साइंस कर लें। इस तरह ब्रेन स्टेम में काफी सारे आप प्लांटर्स कर लें, डिप्लोपिया देख लें। फंडास्कोपी अक्सर आपसे शॉर्ट केस में अगर सेरेबेलम या सीपिंगल है तो नहीं कराएंगे आपसे, तो आप सिर्फ मेंशन करें कि आई वांट टू गो फॉर फंडास्कोपी। तो इस तरह है नहीं,